अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम शुमाइला, क्या हाल है आपका? ठीक है? यस सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, अल्लाह का शुक्र। सर वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द अस्सलाम क्लास। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। Alright जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। So let's just give a quick review of whatever we have discussed in last class. Any volunteer?
सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, any volunteer would like to highlight briefly what we have discussed in last class? The topic was, of course, the psychological dimension of education, and in that we have gone through with different, you see, theories which are underpinning, particularly learning or otherwise the behavior formation or cognitive development. किधर गए वो सारे ज़हीन बच्चे? कुड़ियों की होया ਤੁਹਾਨੂੰ? सर अभी आए नहीं है बच्चे, आ रहे आए हैं। ये जितने आए हुए ये बड़े हैं, 49 आ गए हैं मुझे मिला के। सर can you just do 5 minutes? अभी नमाज पढ़ लें। अच्छा, ओके, या ठीक है, ऐसा करें कि फिर वी आर मीटिंग जस्ट आफ्टर प्रेयर। ऑलराइट, ठीक है। Thank you, sir. अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। नमाज की ब्रेक है। प्रेयर ब्रेक है। नमाज की ब्रेक है, असर की।
Alright ji. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the class. Yes, sir. मैं रोल कॉल अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, मैं रोल कॉल लूंगा, प्लीज अटेंटिव रहिएगा, ठीक है। अबीरा, प्रेजेंट। अलीमा, अलवीना, प्रेजेंट सर। आमना, प्रेजेंट सर। अनिका, आमना एहसन, प्रेजेंट सर। Anna Ani- is present. अनिका, प्रेजेंट। सॉरी अना, Present. मैं फिर भूल गया आपका नाम। अक्सा, अक्सा फयाज, सर अक्सा अपने गांव गई हुई है, वहाँ पे नेट इश्यूज हैं, उसको तो वो अरीबा, क्लास नहीं ले सकेगी आज। ओके, अरीबा, प्रेजेंट सर। अरुमा, प्रेजेंट सर। अरूज, अरूज प्रेजेंट फातिमा, सर। अरूज सैफ, प्रेजेंट। बख्तावर बतूल, प्रेजेंट सर। बरीरा, प्रेजेंट सर। बिस्मा एजाज, बिस्मा फातिमा, प्रेजेंट सर। बुरहान, बुरहान मुस्तफ़ा, बुशरा, प्रेजेंट सर। दानिया, दानिया मुराद, ईमान, प्रेजेंट। ईशा, सर ईशा लियाकत प्रेजेंट। फायजा, फायजा फाइजा मलिक, मलिक प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। जी ठीक है बच्चे। फरियाल, प्रेजेंट सर। फिजा, प्रेजेंट सर। हफ्सा, हफ्सा, प्रेजेंट सर। सॉरी हफ्सा शहजादा, हफ्सा यासीन, हसन प्रेजेंट शहजादा सर। प्रेजेंट। ओके। हाइफा, प्रेजेंट। हमना, प्रेजेंट सर। हिना, प्रेजेंट सर। इल्सा, प्रेजेंट सर। इकरा, प्रेजेंट सर। इरसा, प्रेजेंट सर। जवेरिया रफीक, प्रेजेंट सर। जवेरिया शबीर, जवेरिया शबीर, Sir Sajid, did Present. you mark my present? Hafsa Shahzada. मेरी आवाज जवेरिया शबीर, सर प्रेजेंट। ओके। कायनात, मैं अभी बात Sir, did सुनता you mark my हूँ। present? होल्ड ऑन, मुझे अभी आगे Okay, चलने sir. दें। Okay. कायनात, कायनात नवाब, खुशबख्श, प्रेजेंट सर। खुजैमा, प्रेजेंट सर। किंजा ईमान, प्रेजेंट सर। किंजा आशिक, प्रेजेंट सर। लीजा अरूज, प्रेजेंट सर। माहा असलम, मेरी भी आ गई। माहा असलम, प्रेजेंट सर। मारूफ, मारूफ, प्रेजेंट सर। मलाइका, मलाइका शराफत, प्रेजेंट सर। मलाइका सादिक, प्रेजेंट सर। मारिया जमान, प्रेजेंट। मरियम, मरियम शाहिद, मरियम इफ्तिखार, प्रेजेंट सर। मरियम मुबीन, प्रेजेंट सर। मरियम मुबीन, प्रेजेंट सर। मरियम इफ्तिखार भी हैं। यस सर। प्रेजेंट। ओके। मसफा, प्रेजेंट सर। मावरा मसूद, प्रेजेंट सर। मावरा जफर, मावरा जफर, मिनाहिल, प्रेजेंट सर। मोहम्मदा, मोहम्मदा, मोहम्मद अहमद, Present. मोहम्मद हाशिम, Present, sir. मोहम्मद उस्मान, Present, sir. नाइमा, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट निमरा, प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। नूर, नूर रियाज, प्रेजेंट सर। रबिया,
रबिया डार, Present, sir. Present. राफिया मजीद, Present, sir. रुबाब रहमा महमूद, रुबाब, Present. साहर, Present, sir. समन खालिद, Present, sir. समन असलम, Present, sir. शगुफ्ता, शुमाइला, Present, sir. शुमाइला, Sir, तहरीम, present. ओके हो गया। तो तहरीम नहीं है, तूबा, Present, sir. जफर, Tuba Zafar. Yes, sir. तुबा Present. मनाहिल, Present. जैनुल आबिदीन, Present. जैनब, Present, sir. जैनब सज्जाद, Present, sir. जंजबील, Present. ज़ारा मलिक, जुनैरा कैसर, Present, sir. Sir, कौन? Zara Malik present. ओके बच्चे, जुनैरा कैसर, जुनैरा कैसर, जुनैरा, हाँ ठीक है, ओके मैंने Sir, देख लिया। Bismai Jaz. एक सर मिनट दानिया मुराद। होल्ड जुनैरा मुदस्सर, Excuse me, sir. Present. अच्छा आप बताएं मुझे। Excuse me, sir. Excuse me, sir. Bismai Jaz. मैं शुरू से बोल रहा हूँ, एक मिनट बच्चे, एक मिनट। अक्सा फयाज Sir. जी, Sir, she can you mark her attendance Sir. because she also mailed you. She has a Who? her uncle has passed away. Aksa Fiaz. Who? Bismai Aksa मैंने Fiaz. join होल्ड Sir, ऑन, होल्ड ऑन, कर ली है। किसने? Sir, मैंने अक्सा अक्सा फयाज। अक्सा फयाज आप आ गई हैं? सर एक्चुअली मैं इधर विलेज आई हुई हूँ तो मैं इसलिए आप ज्वाइन नहीं कर क्लास में हैं ना इस वक्त? यस सर, ओके ठीक है, लेकिन सर 5 मिनट। ओके। बिस्मा इजाज, जी सर, बिस्मा जाज प्रेजेंट। बुरहान, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट और किधर हो बुरहान, तुम गायब हो जाते हो यार, हैं ढूंढना पड़ता है मैं आपको। सर। वो नेट नहीं आ रहा था, मैंने अब डेटा पे कन्वर्ट कर लिया, अब नहीं ओके होता। बच्चे, इधर ही। दानिया, सर प्रेजेंट। कायनात, नवाब, मावरा, मोहम्मदा, बस Present, और sir. किधर हो मोहम्मदा? Sir, sorry थी। वेरी गुड, वन शुड बी ऑनेस्ट। की क्लास में आके तुम सो रही थी। ओ नो, कोई बात, उसने सच बोलना है ना, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड। अरोज हाथ खड़ा किया हुआ, खैरियत है? सर जी, सर मेरे मेल के साथ ना कोई इश्यू आ रहा था। आपने मुझे ना 3 बार कोई मेल की थी, लेकिन वो मुझे सीधे पहुंच नहीं रही, मतलब उसकी डिलीवरी नहीं हुई। तो मैं आपसे कहना था कि ना आप मेरी असाइनमेंट को देख लेंगे वो आप तक पहुंची है या नहीं, लेकिन उसमें लिखा था कि मेरे कुछ मैसेज जो आपको सेंड नहीं हुए। अच्छा ठीक है सर। अरोज सैफ कुछ कहना चाहती हैं आप? सर मेरी प्रेजेंट लगा दें। तो क्या लगाया मैंने? सर पहले मैं एब्सेंट थी ना, मतलब क्लास में नहीं थी जब आप अटेंडेंस ले रहे थे। अरोज सैफ ठीक है। और हिना आपने क्यों हाथ खड़ा किया हुआ है? Sir, Henali present वो उस टाइम पे बोल हो पाई गई थी। है ना, प्रेजेंट है आपकी लगी हुई। Okay, sir. Thank you. ऑलराइट, Sir, मेरी भी attendance लगा दें। हो गई है हिना। किसकी? सर आपने मेरी भी लगा दी थी। हफ्सा हफ्सा शहजादा। की? हाँ लगा दी थी हफ्सा Sir, मेरी भी शहजादा टू हफ्सा सर। जी। हफ्सा लग गई है बच्चे, हाँ बताइए। सर मेरी भी लग गई है। मेरी नहीं, नाम बताया करे ना। हफ्सा यासीन। हाँ यहाँ लग गई है। सर मावरा जफर। लग गई है, ठीक है। आपको कैसे दादा हुआ कि नहीं लगी मावरा? सर मेरी क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी। मावरा जमान, मावरा जफर। मावरा जफर, अच्छा ठीक है। आपकी नहीं लगी हुई थी, यस आपकी मैंने लगा। सर कैन यू कंफर्म जोया शब्बीर? हाँ जवेरिया आपकी मेरा ख्याल है।
हाँ जवेरिया लगी हुई है. थैंक यू. Okay, बच्चों. So, what did we discuss last time? Yes, we discussed about the psychological foundation of education, and what did you anything new you learned from that, or you being the you see being in the field maybe at prior to joining this course, you might have gone through the psychology and you might have gone through these theories. तो कोई चीज नई उसमें कुछ लर्न की या पुरानी चीजें थी सारी? Sir, honestly speaking, it was all old. It was all old. So yeah, we knew it. Okay. No, sir. Some of the things I had knew. You come to know. Sir, Come it was to mostly from my Yes, old sir. information. Okay. So for those who have already gone through this, that acted as a refresher, and those who did not, this is something for new, and surely that might have added something in your knowledge. So this was just a refresher, and you might go through these theories in detail in different courses related to your core area. So today I'm going to touch another important area of education, and that is again a concern of so many people. Either they are educationists by profession, or they deal to any other discipline, or they are policymaker, or they are parents, or I mean a number of other stakeholders. So basically, but today I'm going to discuss about the quality in education. uh, so well, I want to know because the quality is something which everyone is aware, and every one of us is expert of quality, or particularly defining the quality, because quality is something which is not associated only with the education; it is associated with everything else as well. Okay, so either it is you see the grocery which we are making, or it is the you see any other item which we tend to which we you see planning to purchase, or you see any dress, or anything else. We keep this thing quality in front of us, and then try to match the things according to that particular very personal criteria of quality which we have made. So I I I did not deliberately set this the personal criteria, because I believe that every one of us having our own criteria of judging different things, and even we judge the quality of the people keeping in view certain characteristics. So you see that our that sense is how much developed, that we keep on assessing the quality of others. Others is the broader term, having things, the people, and all. So uh, from this we can understand the complexity which is associated with this word quality. So let me know that what is your conception about the quality. Can you please raise hand? I will choose from the one who have raised hand, or maybe from the one who did not. Come on. Quality is something which all of you are associated, all of you practice. Okay. What a pity. Out of 72, only 4 knows about the quality. If somebody asks me, I will raise both of my hands. हाँ मिस ज़ारा, क्या हाल है आपका आज? ठीक है? जी सर. ज़ारा, आप क्वालिटी को कैसे डिफाइन करेंगी? सर जो मतलब नेचुरली अल्लाह ताला ने आपके अंदर रखी और आप वो कर सकते हो बहुत अच्छे से. आपको पता है कि आपके अंदर वो वाली एबिलिटी है. कोई एग्जांपल दें? एग्जांपल दूं? सर जैसे मैं हार्ड वर्किंग हूँ, तो मुझे पता है कि ये कोई भी चीज होगी, कोई भी टास्क होगा, तो वो मैं कर सकती हूँ अगर मेरी करने की नीयत हो तो. अगर करने की नीयत नहीं हो तो फिर हार्ड वर्क का कैसे पता चलेगा? है नहीं सर, चुप ही मैं रहेगी कर ना? सकती हूँ. अच्छा चलें, थोड़ा सा हम कोई विजिबल चीज की तरफ आते हैं. ठीक है, तो जिससे हमें थोड़ा सा अंदाजा हो कि आप सपोज यू आर इन अ मार्केट टू बाय समथिंग, हाउ you see judge the quality of that particular. So suppose you are in a market to purchase a pair of
शूज फॉर विंटर, सर्दी बढ़ गई तो आपने सोचा कि अब कोई शू ले लिया जाए बंद, ताकि जो आपको सर्दी से प्रोटेक्ट करे। तो आप उसकी क्वालिटी को कैसे, क्या चीजें देखेंगे कि आपको अंदाजा हो कि ये क्वालिटी का शू है? सर मैं बताऊं? नहीं, ज़ारा उसका बताएगी। टेक्सचर देखें। ज़ारा बताएगी, ज़ारा से पूछा है। हाँ, फिर वो ऊपर से बंद होगा, बूट टाइप ओके, होगा, इस तरह का होगा। और क्या होगा, और बस यही। यही क्या? ये तो अगर आपको सपोज के ये 2 दर्जन मिल जाते हैं एक मार्केट में, तो क्या आप 2 दर्जन में से सिलेक्शन कैसे करेंगे? सर जिसके अंदर हम कंफर्टेबल रहें, अच्छा, जो एक मतलब हम शूज पहन के चेक करेंगे। सर हम मैं बताऊं? नहीं भाई, ये बता रही है ना ज़ारा, तो सुनो। ज़ारा को पहले नहीं, कभी पहले सुना है बहुत ज़्यादा आप लोगों ने इसको, हैं कि नहीं सुना है? नहीं। नहीं सुना तो ऐसे सुनो ना ज़ैनब इसे। अच्छा ज़ारा, आपने कहा कि आप उसको देखेंगी कंफर्ट, ठीक है। आपने कहा कि हम शू पहन के और क्या करते हैं, शू पहन के तो बहुत सारे काम किए जाते हैं, बट वन ऑफ थिंग इज दिस दैट वी आर सपोज टू फील कंफर्टेबल, ठीक है। व्हाट एल्स? चलें हम काम आसान कर देते हैं। अजीब मोहम्मदा, कैन आई? मोहम्मदा, यस सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पर्सनली देखूंगी कि ना शूज कंफर्टेबल है कि नहीं, और उसके अलावा उसकी मैं लेदर देखूंगी, लेदर कैसी है उसकी, अच्छी है कि नहीं है। आप एक्सपर्ट है लेदर की? सर मैं शॉपिंग में एक्सपर्ट नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि हूँ। लेदर जो और है वो आर्टिफिशियल है, या अब तो नहीं सर, 99% सर वो ले 99% लेके अब नहीं नहीं, अब ले लेके अब इतना अंदाजा हो गया कौन सी लेदर अच्छी है कौन सी लेदर अच्छी नहीं है, किसने जल्दी खराब मेरा होना है, किसने लेट खराब होना है। मेरा सवाल ये है कि 99% तो लेदर होती नहीं, आर्टिफिशियल होती है, ठीक है। तो आपको कैसे पता हाँ, चलेगा कि वाकई ये जो ओरिजिनल लेदर है वो लगी हुई है? अच्छा कैसे पता चलेगा ओरिजिनल लेदर है? धूप सर में लेके जाओ। जो प्योर लेदर होती है ना, वो मोस्टली लाइट लाइट उसमें होती है, जो होती है प्योर नहीं होती, वो इतने हाई थिक 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 होती है। तो जो लाइट लाइट होती है ना, वो मुझे प्योर लगती है पर्सनली। ओके, इसका मतलब ये है कि ये यू हैव डेवलप्ड अ क्राइटेरिया ऑफ लाइट जजिंग द स्मूथली क्वालिटी जो ऑफ द। होती है ना उसकी हाँ, लेयर, तो वो मुझे प्योर लगती है। और जो थिक थिक होती है वो मुझे प्योर नहीं लगती, वो खराब भी जल्दी होती है। अच्छा जी, चलें जी। जुनैरा कैसर, आप बताइए। जुनैरा, सॉरी सर, सिग्नल का प्रॉब्लम था। अच्छा, So can you hear me? yeah Mohammed, I'm hearing you, but you told enough. I am now redirecting the question जी। हाँ भी संजबील, तेरे हाथ से छूट रहे ने 10 मिनट। सर उस चीज के बेनिफिट्स देख के पता चलेगा कि उसकी क्वालिटी कैसी है। What benefits? What benefits? Benefit is सर make it हाँ make benefit visible. Invisible तो नहीं होंगे, visible होंगे ना। क्या होंगे वो बेनिफिट? उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना। जिस तरह अगर हम सर कोई एग्जांपल दे सकते हो किसी प्रोडक्ट की? श्योर, जूते को लेके जैसे चलें आप अगर इसे। शैम्पू देख रहे हैं। हाँ, सॉरी सर, मेरा कनेक्शन का प्रॉब्लम था। नहीं अभी अभी बस मोहम्मदा, कोई बात नहीं, जरा इनको सुने जी सर संजबील। कनेक्शन का प्रॉब्लम था, मैं कैरी करूँ बताओ? नहीं नहीं, अभी तो चुप करके बैठ जाओ जी संजबील। सर तो उसके ऊपर लिखा होता है कि ये जो पर्टिकुलर शैम्पू है और जो इसका फ्लेवर है, इससे क्या होगा कि आपके बाल स्ट्रेंथन होंगे और सिल्की होंगे और स्ट्रेट होंगे। तो इस तरह की चीजें, इस तरह हम जज कर सकते हैं कि किसकी क्वालिटी अच्छी है। और इसका ब्रांड्स मतलब फिर भी फ्लेवर। सबकी खराब होती है। ओके, ईमान कहती है फिर भी सबकी खराब होती है। जिसमें झूठ कम फ्लेवर। लिखा होता है केमिकल्स सर हो, ऊपर। अच्छा ओके, ब्रांड हो। ओके। फिर भी झूठ लिखा होता है। लेकिन अब तो ब्रांड्स भी ईमान 2 साहब नंबर। प्लीज। ईमान को ईमान नहीं आएगा। सर सच में मतलब लिखा होता है उस पे कि बाल इतने अच्छे होते हैं, ये वो होते तो नहीं है फिर। यस सर, लेकिन और लेकिन डैमेज सर और सल्फर हो डिफरेंट जाते टाइप हैं, के केमिकल्स होते खराब हैं। हो जाते हैं, सही बाल इस बात तरह सर है। हम नहीं होते। क्वालिटी की बात कर रहे हैं। हम बालों की क्वालिटी की भी बात कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हाँ, बालों की लेकिन तो लेकिन मेरा ख्याल है कि अब इसको थोड़ा सा हम
असल में मैं ये चाहता हूँ आपसे कि आप आइडेंटिफाई करें कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। जैसे ज़ारा ने बताया, ममता ने बताया कि हम उसका कंफर्ट देखेंगे, हम उसका शूज़ की एग्जांपल में लेदर देखेंगे, और अगर आप शैम्पू खरीद रहे हैं तो आप उसका फ्लेवर देखेंगे, चख के कि वो मीठा है कि नहीं है या कैसा है, ब्रांड उसका आप ब्रांड देखेंगे। ठीक है, सो जी मावरा। सर हमने अगर शूज़ लेना है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमने किस कैटेगरी का शूज़ लेना है, और उसके बाद हम जूते के अंदर सबसे पहले उसकी सोल देखेंगे, उसकी स्टिचिंग देखेंगे, उसकी पैडिंग देखेंगे, और हम ये देखेंगे कि अगर हम ये जूता पहन के शॉप में चलते हैं, क्या ये हमें पीछे से तंग तो नहीं कर रहा, काट तो नहीं रहा, छाला तो नहीं बनेगा। उसके बाद फिर हम, अगर हमने जूते की क्वालिटी को देखना है, हम किसी ऐसे जूते के साथ कंपेयर करेंगे या जो कि या हायर क्वालिटी का होगा या फिर से कम क्वालिटी का होगा। शाबाश जी। मलाइका। Yes, sir. जी, आप क्या देखेंगे क्वालिटी के हवाले से? In the shoes. या Yes, so basically the first thing and the important is about its comfort. And I think किसी भी चीज़ की quality, like it may be shampoo or it may be shoe, like हम जब अपने अपने आप को खुद experience नहीं करते थे, like use नहीं कर लेते, तब तक हमें किसी भी चीज़ की quality नहीं पता चलती. good. Okay, so uh, let us sum it up. Thank you very much for participating in this and raising your hands. So it's mean that when we go to buy any product, it's mean that we see different, we assess it, keeping in view, you see the different variables. Okay, different characteristics. That could be its comfort level. That could be its make. That could be its you see material. That could be its you see you see your past experience of using it, and then sometimes you yeah. Yeah, Mohammad Hashim, you are very much right. The standard of something, anything. So it's means that we are supposed to develop that. We want to develop a certain that standard. I mean, the standard is something which is very subjective. Okay. सो उसकी स्टिचिंग कैसी है, उसकी कैटेगरी कैसी है, उसकी पैडिंग कैसी है, ठीक है, वो काम ठीक करेगा, ये तो नहीं है कि वो आपको डिस्टर्ब करेगा और आपको कंफर्ट नहीं देगा जो कि क्लेम किया जा रहा है। ठीक है, सो या यू आर राइट इसमा, quality is how good something, but basically what we are defining now, we are defining that what do we mean by the quality. What do we mean by goodness? So it's mean that if we define the goodness, it's mean that we are able to define the quality of anything. So you see, okay, if we have 70% in this, including me 71% now attending this class, it means that all of us, if we try to define the quality of shoe, because all of us we engage in purchasing the shoe. Shoe is that commodity which we purchase, not maybe that oftenly, but of course we at least once in a year might we purchase, or at least twice or thrice, but minimum once in the year we definitely purchase a shoe. So if we are purchasing shoes, then it's mean that we don't go market without having a criteria, and you see, and then we judge the things according to that criteria. So that criteria basically is the the quality, or the standards of the quality for that particular product, which we try to you see procure. So, and you see from this very limited discussion that all of the participants who have decided, who have discussed, participated, they have shared their views about the quality, and something emerged as a common. For instance, the comfort. In case of the shoe, the comfort is something which more than one participant may have said that they will see to find that either the comfort level is there. Yes, the price is one of the factor. Okay, but you see okay, for how much of us the price is a factor, for how much of us the comfort is a factor, for how much of us the you see past experience is guiding us that from where to purchase the shoe, because the past experience of that particular shoe that was very excellent. So you see that we develop several you see perceptions about the quality, and either it is the quality of shoe, shampoo, food, or anything else.
So everything which we purchase, we compare it with the quality. Either that quality is stated by its manufacturer, or we don't believe on that and we try to judge it by ourselves. So you see the same, if we try to put in the same concept in education, so then how could we could we define the quality in education? So it's mean that the if we have the 70% in this room and we are defining quality by our own way, then you see if we talk about the quality in education, it's means that we could have the 70 different views about what quality in education is. Okay, so you see how complex this phenomenon is, that which we are going to discuss today. So first of all, we try to see that what basically we mean from the quality of education, and how the different experts of the area, particularly those who have worked in the quality in education, they are trying to define the quality and the why quality in education important. What are the different, you see, the platform or international forums which are highlighting the importance of the quality in education. Okay, and what we are supposed to do in order to ensure that quality in education. और फिर हम देखेंगे कि जो मैनेजमेंट में काम हुआ क्वालिटी पे, वो उसने कैसे क्वालिटी इन एजुकेशन को डिफाइन करने की कोशिश की, उसकी बजाय कि क्वालिटी पे काम एजुकेशन में शुरू पहले नहीं हुआ, पहले ये बिजनेस में आया और बिजनेस से फिर ये टर्म जो है वो एजुकेशन में आई. सो मेरा ख्याल है कि मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ और उसमें हम देखते हैं कि ये कैसे जो क्वालिटी का कॉन्सेप्ट है इसको एंश्योर करने की कोशिश की गई है. एजुकेशन और उसके साथ साथ क्वालिटी, ये दोनों चीज़ें साथ साथ आएंगी तो ये okay. So here we are. Just hold on, let me. Sir, am I audible now? Yeah, you're audible. सर सॉरी, वो पहले आप मुझे बुला रहे थे तो मेरा माइक काम नहीं कर रहा था. No problem. Meet Ami. Ami's 15. She was born. आपको नजर आ रही है मूवी कि नहीं? क्लिप Yes, नजर sir, आ आ रही है. Yes, sir. Yes, sir. Okay. आ रही है, sir. Yes, sir. Meet Ami. Ami's 15. She was born in 2000, the year that world leaders agreed to make education for all a reality. And in 2015, world leaders recommitted to that goal. Ami lives in a small town. Her dream is to become a pilot. So, what does she need? She needs to be fit and to maintain good health. She needs support from her family and community. Flying is tough. But most importantly, she needs to be able to get a good education. To fly a plane, she needs to know how to read and write. She also needs to know geography. She needs to understand physics and how to think critically. So today, what are her chances for becoming a pilot? If world leaders don't make education a priority, Ami may not get to go to school at all. And without access to education, she may not know how to get the support she needs to maintain her health. Without an education, it's difficult to dream. Ami should be able to dream and make her education a reality. You can help Ami achieve her dream. Every one of us can. Get involved. Tell your representatives that education empowers. Tell them it's a human right and they need to prove their commitment. Together, we can make it possible. Support the coalition.
So you have seen that in this very short clip, the young girl wants to be a pilot, and in order to realize that dream, she is supposed to go through those very fundamental basic facilities which every state is supposed to provide. And of course, important ones are the health, and then of course the education. So basically, in this, the message is very clear that uh, providing these facility, very basic facilities, um, are the responsibilities of the you see the state's person. Okay, the government is supposed to provide these facilities, and this is why and why, because this is very basic human right as well, and this is an obligation of every state as well. Okay, so basically if the state is not able to provide this facility, अभी हम क्वालिटी एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि उसको ये एजुकेशन मिलनी चाहिए, और एजुकेशन वो मिलनी चाहिए जो कि उसको एनेबल करे। ठीक है, एनेबल क्या करे कि वो अपने जो ड्रीम है उसको रियलाइज कर सके। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम Emmy and so many thousands of the girls and the boys, or millions of the girls and boys, particularly in our beloved country, and we have seen the state of that, कि जहाँ पे 2.5 से 3 करोड़ जो बच्चे हैं वो स्कूल में नहीं है। ठीक है, जो कि एजुकेशन किसी वजह से हासिल नहीं कर रहे, तो इट्स मीन दैट द प्रोवाइडिंग दैम एजुकेशन इज नॉट you see something which is an optional. That is not optional, that is a compulsory, and the government is supposed to provide that education to each and every child of that particular age. एक्सक्यूज मी सर। जी सर मैं यहाँ पे कुछ कहना चाह रही थी श्योर। कि पाकिस्तान में इस तरह होता है कि आपके बच्चे की क्वालिटी है ना, जो वो आपके पैसों पे डिपेंड करती है कि जितने ज़्यादा आप पैसे लगाएंगे उतनी अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन आप उसको दे सकते हैं। नहीं, ठीक है, ठीक है। उसकी वजह ये है ना, जो देखें, जो अभी अगर हम इस वीडियो को इसके साथ उसको रिलेट करने की मैं कोशिश करूं, तो द मैसेज इज वेरी क्लियर, बिकॉज द स्टेट इज नॉट फुलफिलिंग इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, जी सर। elsewhere this is not the case. Elsewhere the state is in most of the countries the state is investing a lot in order to provide education to each and every child. ठीक है, तो but unfortunately here what is happening that 30 years back this was not the scenario. I mean, we hardly find, you see, many private school. Only a few private schools were present. If I talk about the Lahore, and most of the students, either the boys or girls, they go into the public schools, and the public schools they were wonderfully performing. But you see, gradually the scenario changed. Now we have more private schools in Lahore as compared to public schools. ज़्यादा बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं एज कम्पेयर टू पब्लिक स्कूल। सो इट्स मीन दैट द होल ऑफ द पैराडाइम हैज बीन शिफ्टेड। और जो हम, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो हम टॉपिक ये देखने जा रहे हैं, यू सी कि हाउ चैलेंजिंग इज दिस, दैट द व्हाई द पेरेंट्स दे आर चूजिंग द प्राइवेट स्कूल, either they have money or not. If they don't have money, then they can identify a private school which can afford, which they could afford. ठीक है, so because Yes, sir. we can find a whole range, if we talk about the fee, a whole range of school starting from very low fee to very high fee. ठीक है, तो लेकिन आप ये देखें कि ये पैराडाइम शिफ्ट कैसे हुआ कि, और कि जो पब्लिक स्कूल्स में जो एजुकेशन है जो कि बिल्कुल फ्री है, वो फ्री एजुकेशन लेने को नहीं जा रहा। ठीक है, आमिर के आप अपने घर में जो आपकी मेड्स आती हैं, तो आप आराम से कि एक छोटा सा इंटरव्यू कर लें उनसे, ये सिर्फ ये पूछें कि अगर आप अपने बच्चे को कहाँ पढ़ा रही हैं, ठीक है, और आप वो नोट कर लें, और आप देखें कि उनमें से ज़्यादातर के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, और आप उनसे ये सवाल पूछें कि अगर आप अपने बच्चे को अगर वो उनमें से कोई बच्चा अभी स्कूल नहीं जा रहा, लेकिन स्कूल की एज तो पहुँचने वाला है, तो आप उससे सवाल पूछें कि आप अपने बच्चे को कहाँ दाखिल करवाएंगी, गवर्नमेंट स्कूल में करवाएंगे जहाँ एजुकेशन फ्री है, प्राइवेट स्कूल में करवाएंगे। आपके सामने खुद हकीकत आ जाएगी कि ये वो स्ट्रेटा है जो कि अभी हाईली एजुकेटेड नहीं है, यानी कि मिनिमम हो सकता है कि मिनिमम एजुकेशन के स्टैंडर्ड को भी उन्होंने अचीव ना किया हो, बट यू सी कि हाउ द क्वालिटी ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम, अ पर्टिकुलर सिस्टम, वो उन तक पहुंच गई है। तो ये बड़ा एक डायलेमा है कि जो एक, और इसी का जो मीट एमी वाली जो वीडियो तो उसमें जिक्र किया गया कि ये बेसिकली जो उसको उस क्वालिटी की एजुकेशन देना, हेल्थ फैसिलिटी देना, और उस क्वालिटी की
जो कि बच्चों की जो फुलेस्ट पोटेंशियल है उनको रियलाइज करवा सके, वो स्टेट की जिम्मेदारी है। तो जरा ये देखिए, सिंगापुर के एक स्कूल की है, ठीक है। सर शेयर तो नहीं हो हैं? सर ये चली नहीं है। सर द वीडियो इज नॉट प्लेइंग। ओके, ऑलराइट, होल्ड ऑन। आप क्लियर, अब आ रही है नई स्क्रीन? यस सर। सर यस सर। We believe every child can learn. We will teach them. We believe every child is unique. We will provide them with opportunities to achieve their best. We believe every child matters. We will equip them for success in an ever-changing world. These beliefs have guided us in evolving our education system. Our teachers and school leaders work hard to help every child fulfill his potential. In 10 years of basic education, we aim for every child to acquire a broad and deep foundation for lifelong learning. At the primary level, we will help our children develop a strong foundation in core values and subjects. They will be exposed to many diverse and exciting learning experiences, such as the program for active learning. Through the primary years, our children will grow holistically and discover their interests and strengths. At the secondary level, our students will continue to build on their academic foundation, deepen their 21st century competencies, and participate in a diverse range of programs that cater to their different interests and abilities. Our schools facilitate enhanced learning experiences for our students and take learning beyond the classroom. Learning will come alive for our students as they develop relevant skills and competencies that they can apply to real-world situations. Through various curricular and co-curricular activities, our students will develop their identities and deepen their values. This will prepare them to journey through life with purpose. But all these programs would not be possible without our caring teachers. We have dedicated teachers with a deep sense of purpose to do the best for every child placed under their care. Through their constant upgrading of their professional skills, our teachers strive to do their best in teaching and caring for all our children, especially for those who are falling behind. Parents are our valued partners in the education of our children. We have numerous platforms for parents to be involved in schools to support our children's learning. There are also multiple touch points between parents and our schools. We can work together
to provide the best possible education for our children. Together, we can make every school a good school. Our children will have a broad and holistic education that will inculcate in them deep values and skills, an education that prepares them well for life in the 21st century. जी सर ये थी तो क्वालिटी ये देखकर दिल एजुकेशन। कर रहे हम भी सिंगापुर चले जाएं। सर मेरा भी अच्छी थी। वाकई में बिल्कुल सर ही ऑपोजिट। नहीं सर, हमें पाकिस्तान में ये सब कुछ करना होगा, वहां जाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ ये बात सर ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता। वो हाँ फिर लेकिन 100 अगर साल हम बाद चाहें होनी तो हो है ये सकता है। चीजें। चलें नहीं, अगर at हम least चाहें तो हो सकता है। I mean, at least we are supposed to think over this, and nothing is impossible in this world or any part of the world. Okay, Yes, but sir, this exactly. basically Yes, the sir. need is that the we first of all we have to envision for that, and then we are supposed to move like this. Okay, and surprisingly, I mean, all of those are the public schools. Uh, and uh, and you see if you try to identify the, I mean, if we take the particular example of the Singapore, if you try to locate its performance in the international exams, then of course the Singapore is one of the countries in the world which is performing excellent in different international exams. ठीक है, कई इंटरनेशनल एग्जाम आते हैं, पीसा, टीम्स और ये, तो सिंगापुर के बच्चों की बड़ी बेहतरीन उसमें परफॉर्मेंस रहती है. मोस्ट ऑफ द एशियन कंट्रीज दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल, ऑफ कोर्स सिंगापुर, ताइवान, देन चाइना. ठीक है, तो ये यहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, स्पेशली इन मैथमेटिक्स एंड साइंस. आप देखें ना कि आप में से हो सकता है कि कई बच्चों ने जो, जब आप लोग मिडिल स्कूल में थे, 8, 9, 10 में, तो बहुत सारी वो 8 पर्टिकुलरली 6, 7, 8 में तो जो साइंस की बुक्स हैं वो सिंगापुर बेस्ड जो है ना वो बहुत सारे पाकिस्तान के स्कूलों में पढ़ाई जाती है. ठीक है, और पर्टिकुलरली वो स्कूल भी कि जो कि ओ लेवल्स की तरफ जाते हैं, और वो भी जो कि मैट्रिक स्ट्रीम की तरफ जाते हैं. एंड एक्सप्लोरिंग साइंस इज़ वन ऑफ देम, वेरी मोस्टली very commonly used textbook in most of the private schools of Lahore and particularly Pakistan. So we have seen, yes, apart from the you see the resources, the material resources, the rest of the things we have with us. All of the other factors are available except those type of you see uh, um, material resources. Okay, and the material resources is not something which one cannot procure, or one cannot give the relevant concept without the use of you see one can give the relevant concept without the use of not those which we have seen, but maybe with the use of many those which our teachers, they are supposed to you see make for the student. So if somebody asks me how do I feel that about the possibilities of having these type of school in Pakistan, so of course I'm very optimistic. I mean, once you aim that you want to change a system, then you see then nothing is impossible for us or any other person. You see, but that needs some sort of you see dedication and the devotion from the part of a number of the participants, number of the stakeholders. ठीक है, तो इसमें इस प्रेजेंटेशन में जो दिखाने का, इस शॉर्ट क्लिप में जो आपको दिखाने का मकसद वो ये था कि हम ये देखने की कोशिश करें कि जो उनके इंस्टीट्यूशंस में जो क्वालिटी है उसकी वो कैसे विजिबल है. ठीक है, और इन दिस वेरी शॉर्ट वीडियो the uh, the Ministry of Education of Singapore has tried to show the how you see the what are their school look like,
how the students they are engaged into wide variety of activities, and we have seen that both you see curricular and co-curricular activities, and then they have identified the role of the teachers, that without the help of the teachers they are not supposed to move ahead, and it is true in every context. And of course they are engaging the parents as well, and the parents um, they are in collaboration with the school and the school teachers, and then they are you see taking part in the different activities which the school is organizing. And you see how the school is building building skills and disposition of the students, and equipping them with those skills which are required for you see incoming centuries, and particularly this 21st century skills. So um, आप में से कोई सिंगापुर गया हुआ है? Have you visited Singapore? Sir, I've not been to Singapore, but I've been to Malaysia. There were students who were actually from Singapore and part of the university I was studying in. So here, they also expressed their experience of their education over there, like very much of premium level, and स्पेशली इन ड्यूरिंग दिस कोविड-19 जो स्टूडेंट्स को फिर जाना पड़ा था वापस अपने कंट्रीज, तो उस दौरान भी उनके लिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं होता था. दे कुड ऑलवेज जस्ट easily adjust to the online learning system. It was actually not just in Pakistan, internationally as well. Is online learning system बहुत openly पढ़ाया जाता है in all the like LMS is in Pakistan. Over there they have systems like Blackboard. They have other systems which are like constantly operating. So basically integrated hota hai, not just online but in the field from the middle school level, like this showed in the Singapore video. Okay, if you're learning about science or of geography, they take you to places like field trips ho jate hain. They ask you to do projects at home and everything. So these things were really much missing जो पाकिस्तान के कंपैरिजन में. हाउएवर जो मैं ये पॉजिटिव कह सकती हूँ कि मैं अभी कराची से जब लाहौर आई हूँ, तो द स्कूल माय यंगर सिस्टर एंड माय ब्रदर इज इन बैरियर के स्कूल में है, तो उनकी ऐसी एक्चुअली क्लासेस होती हैं. लाइक इट्स मोर लाइफ लर्निंग स्किल्स की एक्चुअली क्लास भी होती है, very not only for boys or girls, like they taught teaching both of them के how to work things out in the kitchen, how to life learning के जो community services classes होते हैं वो साथ पढ़ाए जाते हैं. So that's something that I believe थोड़ा सा effort किया जा रहा है पाकिस्तान में, लेकिन इतना openly नहीं. It's not well known. It's only in small level. Small pockets. So you see कि ये आपने वो बिल्कुल हफ्सा ठीक है. और अगर आप सिंगापुर की हिस्ट्री देखें तो एक वक्त था कि जब ये मलेशिया, इंडोनेशिया और ये अलग हुए, तो सिंगापुर एक बड़ा मार्शी सा एरिया था, ठीक है. एंड नन ऑफ द कंट्री लाइक टू यू सी टेक इट, बिकॉज कीपिंग इन व्यू दैट state of the physical feature of that particular area. And then they luckily they got a wonderful prime minister. If I'm not wrong, maybe Mr. Lee. I'm not sure about the full name. And that person has transformed that marshy island into one of the best economy of the world. Okay, one of the best economy of the world. और अगर आप उसकी प्रोडक्शन देखें चीज़ों की, तो वो हार्डली वहाँ पे उसमें वहाँ वहाँ पे बहुत कम चीज़ें इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वहाँ पे शायद ना होने के बराबर है. और बहुत सारी चीज़ें उसकी मलेशिया से आती हैं, और इंडोनेशिया से और मलेशिया से बहुत ज़्यादा आती हैं. तो बट यू सी कि the Singapore transformed itself into a human resource developing industry. वहाँ पे बेहतरीन ह्यूमन रिसोर्स वो डेवलप करती है, ठीक है. एंड दैट ह्यूमन रिसोर्स इज रिक्वायर्ड इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि वो एक चूँकि बड़ी अहम पोर्ट है, उसकी लोकेशन ऐसी है कि दैट इज़ इकोनॉमिकली एक उसकी लोकेशन ऐसी है कि वो पोर्ट है, और वहाँ पे बेशुमार जो शिपिंग कंपनीज हैं उनके हेड ऑफिस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हेड ऑफिस वहाँ पे हैं, ठीक है. सो और टूरिज्म उसकी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और everybody would like to visit that, and that is really what's seeing place. I used to be there in 2016, I think, if I'm not wrong, for a very short training of for 2 weeks in National University Singapore, and there we learned, we participated. We mean that we were 7% from the UMT, and we have attended different courses related to research
I have attended a course related to mixed methods research, and the professor was from Switzerland, and he taught wonderful. And we were 30 students from the different countries, and we have learned a lot from the not only in the class but of course from the the streets of the Singapore and the bazaars of the Singapore and so many other places. And that is the remarkably wonderful place. And the things which we have heard when we were in school here in Pakistan, and particularly in textbook, we have gone through that Singapore is a place where one is supposed uh, to 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 get fine ticket just because of spitting. ठीक है कि वहाँ पे थूकने पे भी फाइन होता था. एंड व्हेन वी हैव आई हैव सीन दैट प्लेस, इसमें कोई शक नहीं है कि इट इज़ दैट मच नीट एंड क्लीन. एंड द पीपल they are very courteous. And you see, think about how clean their places and their cities and their hearts are. ठीक है तो uh, and the kids, they are very courteous. We had opportunity to chat with some of the students there, and so you see कि how that education system has which जिसकी अभी हमने एक झलक देखी है, that has transformed that is not only transforming that nation but of course I mean the so many other nations, because वहाँ पे human resource जो तैयार होता है बहुत सारी दूसरी जगहों पे जाकर भी काम करता है. तो इसका मतलब ये है कि जो quality in education है, this is something which is invisible but visible in so many ways. ठीक है. And the one way of that is to realize that what quality is just by seeing that particular video. अच्छा, अब हम देखेंगे ये जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, ये इसके हवाले से कुछ इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं जो कि हर कंट्री को पूरी करनी है. एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान इज नो एक्सेप्शन. पाकिस्तान को भी जो है वो पूरी करनी है कमिटमेंट. तो एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसको कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. ठीक है. तो वो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, बेसिकली वो हमें ये बता रहा है कि हमने जो एजुकेशन है और जो क्वालिटी एजुकेशन है वो उसको प्रोवाइड करना है. वो हर एक की ज़रूरत है. ठीक है. तो मैं इस वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है बेसिकली वो क्या है. ये स्क्रीन आपको नजर आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. मूवी आ रही है? No, sir. No, sir. ओके ये मुझे ना भाई इतना गुस्सा नहीं करते. Here it is. Okay, it's clear now. Let's go with it. The Sustainable Development Goal है क्या? ठीक है. What are the SDGs? In 2015, world leaders from 193 countries agreed the Sustainable Development Goals, or SDGs, the world's new action plan for the next 15 years to eradicate extreme poverty and hunger, fight inequality, tackle climate change and achieve sustainable development for all. The SDGs follow the Millennium Development Goals, or MDGs, agreed in 2000 in a global coordinated attempt to tackle development issues. As a result, the number of people living in extreme poverty has declined by more than half compared to 1990. More girls and boys go to primary school than ever before, and far more people have access to water and essential medicines. But progress of the MDGs has been mixed. Today, over 800 million people still live in extreme poverty. They are also most vulnerable to the increasing impacts from climate change and environmental degradation. Years of hard-won progress fighting poverty could easily be wiped out by even small conflicts, economic crises, or natural disasters. Also, Sub-Saharan Africa and Southern Asia consistently achieve less progress than other regions.
The MDGs measured success on national averages, often missing what happened with marginalised groups like people with disabilities, indigenous groups, rural communities and women. The international community recognised the new challenges and that human prosperity must go hand in hand with protecting the planet. After a 3-year participatory process, world leaders finally adopted 17 Sustainable Development Goals. So what are these goals for? They are end poverty for all, freedom from hunger, health and well-being, quality of education, gender equality, clean water and sanitation, sustainable energy for all, decent work and economic development, innovation and resilient infrastructure, reducing inequalities, sustainable cities and communities, sustainable consumption and production, action on climate change, healthy oceans, sustainable ecosystems, peace and justice, global partnerships. There are 4 underlying principles that come with the SDGs and that are transformational in the way we work on development in the future. Firstly, the SDGs are universal. They apply to every country, rich and poor, north and south, developed and developing. They recognise that global challenges like tackling climate change and changing models of development require global solutions. Domestic policies that look at these issues in one country will have an impact on other parts of the world, so we need to coordinate. Secondly, they integrate all dimensions of sustainability: economic development, social progress and environmental protection. For example, they tell us to grow enough food for all without destroying the soil or overusing water, to develop our economies without increasing inequality, or to produce enough electricity for all without pumping more. Governments have agreed no goal should be met unless it is met for everyone, including those in society most vulnerable and hardest to reach. So education must reach indigenous communities, jobs created for women and men, quality healthcare available for all rural communities, and water and sanitation facilities accessible for people living with disabilities. Tackling exclusion is the key to tackling inequality. And finally, the SDGs require the participation of all. The process to agree the SDGs took years and included national dialogues, consultations with civil society groups, the private sector and academia, and ended with negotiations between all governments at the UN. There's a strong sense of ownership of these goals. The result is ambitious, but it reflects what the world wants. Today, the implementation of the SDGs requires ongoing participation at a national and local level. All stakeholders have a role towards their successful achievement. Taken together with the Paris Climate Change Agreement and the Pope's encyclical Laudato Si, the SDGs provide a new framework. So, basically, in this presentation, we have seen that um, other than we know that the providing education is a requirement of the government, but you see that the government has bindings with international agreements, and this you see sustainable development goal, particularly the sustainable development goal 4, that is linked with whatever we are going to discuss about the quality education. Okay, it's mean that whatever we are supposed to do in this area, we are not only doing it because we want it quality, but of course it will satisfy or you see fulfill those obligations which we have with other you see partners. तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जो
So, uh, so it's mean that we have seen these different scenarios where we have seen the school in a country, and then of course we have seen that what is expected from this um, you see sustainable development goal. ठीक है, तो हम इसको देख के अगर हम डिफाइन करनी चाहें क्वालिटी को, तो मैं इसकी डिटेल में जाऊंगा, बिकॉज नाउ आई एम श्योर दैट द यू कैन डिफाइन द क्वालिटी ऑफ education, because the you not only because of this that you have gone through these this video and this you see sustainable development goal, but because you are recipient of that of education right from your preschool till now. ठीक है, you are receiving that education. ठीक है, so it's mean that the thing which you are in process of receiving since your childhood, right from your playgroup or preschool, it's mean that you can better tell about the quality of education which you have received or you are still receiving. Okay, so this is why I said that I mean, to me, all of you are equal. You all of you are competent enough to give the answer of this question. Okay, how do you define quality in education? Because you have more than um, 14 years of experience in getting this, in getting the education in different institution. So, who can better know the quality of education? Who can better define the quality of education than you? Is it hard to define or easy? And we have seen, right, I mean, if you just try to recall the start of our class, then I have asked you about how you define, how you select the shoe, what criteria will you use, and you have identified yourself. You see that you see these things, कंफर्ट लेवल है, उसकी मेक है, उसके उसका मटेरियल है, उसकी कैटेगरी है, उसकी स्टिचिंग है, उसकी जो पैडिंग है, वो काम कैसा करता है, कंपैरिजन क्या है, यूज उसका क्या है, एंड सो मेनी अदर्स. ठीक है, so it's mean that when you are saying this, you are defining the quality. So is it hard to define or easy? Sometimes it becomes very hard if you are unable to you see to grasp the feature of that particular product. ठीक है, then you get help from otherwise it is very easy. So quality, sometimes it seems that the quality is hard to define. Quality, you know what it is, and the same thing is identified by the piercing. वो क्या कहता है कि quality, you know what it is, yet you don't know what it is. If no one knows what it is, then for all practical purpose it does not exist at all. But for all practical purposes, it does exist. So a little bit philosophical, but these are the wonderful words. Okay. So these lines, they are basically defining that how hard it is to define the quality of something. You cannot define it. Okay. You cannot define it, but you know it. And sorry, मुझे स्क्रीन यहाँ से नजर नहीं आ रही, तो मैं इसको थोड़ा सा reduce करूँगा. You cannot define it, but you know it when you see it. So of course it is that when we see it, then we try to define that what is its material, what is its comfort level, what is its category, and so many other things. सर स्क्रीन क्लियर नहीं है. क्या कह रही है स्क्रीन? क्लियर है सर. सर ब्लर है थोड़ी. कभी मोबाइल की स्क्रीन भी साफ कर लिया करो. नहीं सर, ब्लर है. बिल्कुल ठीक तो है स्क्रीन. नहीं ब्लर है. अच्छा, मैं उसको वो पापा उसमें जो स्लाइड शो से मैं निकाल लाया था, क्योंकि ये यहाँ पे ना मेरे लैपटॉप पे वो नीचे किसकी पट्टी चल रही है जो जूम है, तो उसके नीचे फिर कुछ वर्ड्स आ जाते हैं तो वो पढ़े नहीं जाते, तो मैं फिर उसको दूसरे उसमें मोड में ले लेता हूँ. एनी हाउ, क्वालिटी इटसेल्फ इज अ somewhat more ambiguous term since it has connotations of both standards and excellence. ठीक है, हमें इसमें एक्सलेंस भी चाहिए और ये हमें स्टैंडर्ड, आप में से किसने स्टैंडर्ड की बात की थी चैट में. ठीक है, तो जो आप देखेंगे ये हम स्टैंडर्ड की जब बात करें, इट्स मीन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम एक्सीलेंस की बात कर रहे हैं, इट्स मीन दैट इज समथिंग व्हिच इज हाईलाइटिंग द क्वालिटी. आर क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड सेम? इसको देखने की जरूरत है. क्या ख्याल है आपका? ठीक है, चलें, आपका ख्याल बाद में लोग आगे इसको देखते हैं कि जी जवेरिया. Sir, should I answer the question? Yeah.
Sir, quality and standard are not same but are correlated, as quality determine and design some standard for everything. If we want to describe some quality, we have two standards: bad quality and good quality, and then we decide which thing lie in which standard. Okay. Hmm. All right. So the quality and are the quality and standard same? You rightly identified that. Let's see the next bulleted statement. The professional bodies would set the standard. ठीक है, while an institution's quality would depends on how well their students succeed in meeting them. ठीक है, so it's mean that the standard is something which is set by anyone, and who that one anyone is supposed to be, that depends. For instance, either the teacher will set certain standards, or the university, the department set certain standard, the quality enhancement cell of the university will set certain standards, and then the others are supposed to achieve those standards, or the higher education is supposed to set certain standards, or the accrediting bodies, which are the professional bodies, they are supposed to set certain standards. Okay, the program which you get approved from any external body, they set certain standards, and if we fulfill those standards or achieve those standards, it means that we have achieved the quality which is expected through those standards. So basically the standards tell us that this is the you see this is the mark which you are supposed to achieve, and how we are going to achieve that depends upon so many internal processes. तो अगर Sir, मैं on that note, if you try to like you where you said there are authoritative bodies that are basically trying to set these standards. So we can describe quality as a feature and characteristic that is set, whereas standard is the benchmark that we can be inspired to achieve, right? basically, yes, you are very much right. I mean, in principle, it is like so that the standards are just like the benchmark which we want to achieve. Okay, and whatever processes we are, you see, whatever the processes which are taking place in any institution, those are basically meant to achieve those standards. Okay. So इसका मतलब है कि standard is a benchmark, that is you see, that is a post which you are supposed to achieve, where you are supposed to reach, and how you are reaching that. That is basically the whole process which is taking place, and that is building those competencies, skills, and disposition which are required by that you see standard of the benchmark. जब वो सारे आपके अंदर आ जाएंगे तो आप उसको achieve कर लेंगे. So it's mean that the standards always have a important place in quality, because we measure quality keeping in with those standards. अगर आपको मैं कहूँ कि आप इस जूते की क्वालिटी जो है मेजर करें, तो आप उस जूते की क्वालिटी आप कैसे मेजर करेंगे? आप उस जूते की आप उसकी क्वालिटी मेजर करेंगी, आप कुछ अपने स्टैंडर्ड्स लेके जाएंगे, और आप उन स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट उस प्रोडक्ट को मैच करेंगी कि क्या ये जो है वो सारे के सारे स्टैंडर्ड्स उसको मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है. अगर वो नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि इसकी क्वालिटी वो स्टैंडर्ड के नहीं है जो कि आप चाहते हैं. अच्छा, ये एक स्मॉल प्रेजेंटेशन जो कि हमें ये ये जो चीज़ हमने देखी ना कि वो प्रोसेसेस क्या होंगे, तो बेसिकली हम उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें पता चले कि एजुकेशन के अंदर जो स्टैंडर्ड की जो क्वालिटी की हम बात करते हैं, या जो हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं, उनको कैसे डिफाइन किया गया. लेकिन अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि जो SDG 4 था, वो बेसिकली उसके वाले से ये एक बड़ी शॉर्ट सी प्रेजेंटेशन है, इसको देखते हैं.
Okay, so I mean, this video was just again a reiteration of the importance of the education, that how that education is that how the education is supposed to be a vehicle in order to achieve the rest of the you see sustainable developmental goals. So coming back to that. Yeah. So the professional body would set the standards, while an institution quality would depend on how well their students succeeded in meeting them. But of course, the the institution is supposed to make those arrangements that the students they meet them in the way as the desired by that particular body. For instance, अगर हम चाहते हैं कि हमारा जैसे ये जो बीएस का प्रोग्राम है, ये कोई प्रोफेशनल बॉडी जो सी है इसको एक्रेडिटेट करे, और या अगर हम चाहते हैं कि इसके हम इकोवनेंस और इसकी जो एक्रेडिटेशन है वो किसी बाहर की किसी बॉडी से ले, प्रोफेशनल बॉडी से, तो दैट बॉडी विल टेल अस दैट दीज आर आवर स्टैंडर्ड्स. इफ यू build your program around these standards, then we will assess you, and then we will decide whether your program is at similar standards at which our programs in our countries are running. So we will then talk about you see the uh, uh, giving that equivalent to our program. So you see how much the standards those are important, but the standard alone are nothing unless we build all those processes so that the student they develop those competencies, skills, and disposition which ultimately those standards are measuring. So quality as perfection or consistency, ठीक है, identifying two modes. तो अच्छा, हम वहाँ पे ब्रेक कर लेंगे जहाँ पे अभी अजान शुरू हो जाएगी, ठीक है? तो आप में से जो पहले अगर अजान सुन ले तो नमाज मुझे ब्रेक बता दीजिएगा. सर, हम कितने फिर मिनट की? हम 20 मिनट की ब्रेक करेंगे ताकि हम नमाज पढ़ लें और एटलीस्ट अ कप ऑफ टी, फिर हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है? तो ओके जहाँ सर। अजान होगी तो हम इसको छोड़ देंगे. क्वालिटी एज परफेक्शन और कंसिस्टेंसी, ठीक है? अब आप देखें ना कि इफ यू ट्राई टू आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम योरसेल्फ, ईच ऑफ यू, that what does it mean to you? Either you want to see a perfection in a thing and then it will be a quality, or the consistency is that the product is giving the same result every time use it, okay? It's mean that every time it gives the same sort of satisfaction or same outcome which is expected, so it's mean that there is a consistency in that. So perfection, how the perfection is measured in measured or explained in you see other than education. Zero defects or right first time, conforming to specifications. Zero defects, इट्स मीन कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसमें परफेक्शन कब आएगी? जब उसमें जीरो डिफेक्ट हो, कोई भी डिफेक्ट ना हो. और डिफेक्ट कैसे आएगा? कि कंफॉर्मिंग टू स्पेसिफिकेशन, के जो आपने स्पेसिफिकेशन सेट कर दिए उस स्पेसिफिकेशन के ऊपर वो पूरी उतर रही है हर हाल. इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई वो परफेक्ट है, द प्रोडक्ट इज परफेक्ट, उसके अंदर कोई नथिंग इज वेस्ट दे, ठीक है? जीरो डिफेक्ट है उसके अंदर, कोई डिफेक्ट नहीं. Fitness for purpose, which might mean either meeting customer satisfaction or mission goals and objective, which means an institution meeting its own stated objective. और दूसरी चीज ये है कि इसका मतलब ये है कि क्वालिटी क्या है कि आप जो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन है उसको मीट करते हैं, या आपने जो अपने स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, गोल बनाए हुए हैं, आपके वो जो गोल हैं वो अचीव होते हैं जब वो आपकी प्रोडक्ट बाहर आती है या सामने आती है, ठीक है? तो आप देखें कि क्वालिटी को एक्सप्लेन करने के जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो कितने कितने वेरिएबल्स हैं कि जो विच सर वी. अजान स्टार्ट हो गई। अच्छा चलें, ठीक है, ओके. वी विल मीट आफ्टर 20 मिनट्स इंशाल्लाह, ठीक है सर? सर या ब्रेक थोड़ी लेट कर दें, यहाँ मुझे एक्स्ट्रा टाइम दे दें क्योंकि यहाँ पे अभी नमाज अजान में से 15 से 20 मिनट रह रहे हैं. अच्छा कोई तो मसला नहीं है, कैसी हम अभी क्लास? कर लेते हैं, फिर आप एक्स्ट्रा टाइम मुझसे ले लीजिएगा. नो प्रॉब्लम. यस सर, मैं एक्स्ट्रा टाइम ले रहा हूँ क्योंकि फिर लेट हो जाता है. ठीक है बच्चे, ओके. थैंक यू. फिर वापस कितने बजे?
ब्रेक कितने बजे खत्म होगी?
मजाक कर रही थी देर। कितनी देर की ब्रेक? मैं हूँ उमर मुस्तफा। मैं हूँ उमर मुस्तफा। ब्रेक कितनी देर की है? कोई सुन रहा है? जी ब्रेक कितनी देर की है? 5:20 तक है। ओके। All right, ji. Welcome back. So, I'm connecting from where? Left. Ah. Okay, so let me share a short video with you. वो उसमें जो टारगेट्स बताए गए हैं ना, वो टारगेट से आप ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि जो क्वालिटी है एजुकेशन में वो कैसे आएगी, उसके लिए हमें क्या कुछ करना है। ठीक है,
So these are discussed in this short video. क्लियर है स्क्रीन आपको? Yes, sir. Yes, sir. So you have seen that in this short video the various targets within that Sustainable Development Goal 4 have been identified. That what we are supposed to do. We mean the governments. These goals are not for the individual. These are for the governments. Okay, what the governments are supposed to do in order to provide a quality education to its citizens. Okay. Not very, the new concept, but of course, one of the way of how we define the quality. Okay, it means the quality equals customer satisfaction. मसलन अगर आपने जैसे हम शू की एग्जांपल लें तो अगर वो शू आपको सेटिस्फाई कर रहा है, इट्स मीन दैट the shoe is of quality to you, and that if that shoe is satisfying you, maybe the next time you go there and again purchase the same on expiry of the first one. So this is one of the way to define the quality, that it equates to the satisfaction level. The word quality comes from the Latin qualis. ठीक है, अगर हम इसकी थोड़ा सा एटामोलॉजी में जाएं तो हमें अंदाजा होगा कि ये जो इसका माखिज है वो क्या है, इसकी रूट क्या है. द वर्ड क्वालिटी कम्स फ्रॉम द लैटिन क्वालिस, मीनिंग व्हाट काइंड ऑफ. द क्वालिटी ऑफ समथिंग कैन बी सेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट्स नेचर. ठीक है, इसका मतलब है कि उसकी नेचर कैसी है. हम अगर हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो इस मीन दैट वी आर एक्सप्लोरिंग द नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. People use quality freely when they talk about things or services. I mean, right from the morning to evening, you see them at several occasions. We talk about the quality, either we talk about the product, we talk about the services. Let's see some formal definitions of the quality. फॉर्मल से मुराद ये है कि उससे जो एक वो इंस्टीट्यूशन, वो इदारे या वो फ्रेमवर्क जो कि डिफाइन करते हैं, जिसमें कि ISO इज़ वन ऑफ देम. Degree to which a set of inherent characteristics fulfills the requirement. ठीक है, यानी कि जो उस चीज़ की करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करें. जैसे कि आपने अभी वो जूते की एग्जांपल से हमने शुरू किया, तो आपने बताया कि ये उसके अंदर करेक्टरिस्टिक्स होंगी तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होगी. करेक्टरिस्टिक्स अब क्या हो सकती हैं? डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स, फॉर इंस्टेंस फिजिकल, सेंसरी, टेम्पोरल, फंक्शनल. ठीक है, ये सारी उसकी हो सकती है. देखने में कैसा है, क्वालिटी कैसी है, ठीक है, कंफर्ट लेवल है, जो जिस काम के लिए बना है वो कर रहा है. रिक्वायरमेंट क्या है? नीड और एक्सपेक्टेशन दैट इज स्टेटेड और इम्प्लाइड और ऑब्लिगेटरी, कस्टम और कॉमन प्रैक्टिस फॉर यू. आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? ठीक है, कि आप उन एक्सपेक्टेशन जो हैं वो उन पे आप कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते और उन एक्सपेक्टेशन को सामने रखते हुए आप किसी भी चीज़ या उसकी करेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं.
So, if we try to see this, then it will help us to further understand that what quality is. Quality does not happen by accident. It has to be planned. I mean, if we want, if you see that the products which you are using, ठीक है, जिनकी क्वालिटी से आप मुतमिन है, तो क्या उनकी क्वालिटी जो सी है वो एट वंस आ गई, या उसको एक continuously that has been evolved over a period of time, and they the producer is putting effort to not only maintain it but to further improve it. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो क्वालिटी है वो एकदम नहीं आती, वो इवॉल्व होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और उसको प्लान किया जाता है। खुद ब खुद नहीं आएगी, स्पॉन्टेनियसली नहीं आएगी। ठीक है, it is not something that you are doing in the laboratory and instantly you come up with that this is a high quality thing. I mean, the quality that evolve. ठीक है, for instance, you think about the quality of your thoughts. So do you think that your thoughts are product of an accident, or you gradually your thoughts are gradually evolving? Okay, if you try to compare these your thoughts over a lifespan which you have covered so far, then you will see that जो आपके थॉट्स की क्वालिटी है वो 5 साल पहले कुछ थी, 10 साल पहले कुछ थी, 15 साल पहले कुछ थी। ठीक है जी, अबीरा, यू वांट टू से समथिंग? सर यहाँ पे ना लाइट चली गई है, तो ना मुझे आपकी आवाज कट कट के आ रही है, तो अच्छा, काइंडली एक मैं समझा शायद आप अगर कोई मेरी डिस्कनेक्ट होगी ना। आप कोई इसके हवाले से क्वेश्चन करेगी। ठीक है, नहीं सर, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, इसलिए हैंड रेस की है। ठीक है, ओके। सो हैंड रेस का मतलब ये था कि आप कोई पूछना चाहती हैं। एनी हाउ, वी डोंट, तो ठीक है कि क्वालिटी डज नॉट हैपन बाय एक्सीडेंट। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हम एक्सीडेंटली जॉनसन है जो क्वालिटी है उसको असर्टन कर लेते हैं। वी डोंट हैव टू हैव क्वालिटी एज अ गोल, वी डो नॉट हैव टू हैव क्वालिटी एज अ गोल। सर्वाइवल इज सर्वाइवल इज नॉट सर्वाइवल इज नॉट कंपल्सरी, वी डू नॉट हैव टू हैव क्वालिटी एज अ गोल। ठीक है, सर्वाइवल इज नॉट कंपल्सरी, क्वालिटी इज नॉट एनी सिंगल थिंग बट एन aura, an atmosphere, an over overpowering feeling that the institution is doing uh, everything with excellence. So it's mean that the quality is something which you try to set. I mean, you are supposed to work for that. You are supposed to you see plan for that. Okay, and you see that our survival is not compulsory. It's mean that the we don't. You see that many of the organization they survive. We don't want to survive. We want to thrive. ठीक है, सर्वाइवल इज स्टील मिल भी तो सर्वाइव किया कितना अरसा, अभी भी सर्वाइव कर रही है, पीआईए भी सर्वाइव कर रही है, बट यू सी कि व्हाट इज दैट सर्वाइवल। ठीक है, एंड वन टाइम इन द पास्ट द पीआईए ने अपने जहाज यानी कि ना वो एमिरेट्स को दिए। उनके पास जहाज भी नहीं थे अपने, और पीआईए ने अपने जहाज दिए, और सारे का सारा एमिरेट्स को डेवलप करने के लिए उन्होंने उस वक्त सारे का सारा ग्राउंड वर्क किया, और अपने बेशुमार इंजीनियर और वो लोग इन्होंने वहाँ पे भेजे। ठीक है, तो अब नाउ यू सी द वेयर द एमिरेट्स इज एंड वेयर द पीआईए। ठीक है, तो सर्वाइवल इज नॉट कंपल्सरी, एक्सीलेंस इज कंपल्सरी। ठीक है, तो ये एक यानी कि ना ये जो सेकंड बॉक्स है, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि वी डोंट हैव टू हैव क्वालिटी एज अ गोल। ये एक गोल नहीं है कि अचीव हो गया तो खत्म है, ऐसा हर चीज नहीं है। सर्वाइवल इज नॉट कंपल्सरी, वी डोंट वांट टू सर्वाइव ओनली। पीआईए की भी तो सर्वाइवल है ना। ठीक है, इसका मतलब है कि उसकी एक्सीलेंस एक गोल उसने अचीव कर लिया और उसके बाद वो खत्म। अब वो सर्वाइव कर रहा है, बट कैसे सर्वाइव कर रहा है? वेंटिलेटर के ऊपर सर्वाइव कर रहा है। एंड यू सी कि उसके जो जिस ऑर्गेनाइजेशन को उसने डेवलप किया, जिस एयरलाइन को उसने डेवलप किया, एमिरेट्स को, एमिरेट्स इज थ्राइविंग। यू नेम द कंट्री एंड यू सी कि एमिरेट्स वहाँ पे जाते हैं। कभी आप उसके जो एक वर्चुअल उसकी जो फ्लाइट लोकेटर को आप ज़रा ओपन करके देखें। अब तो शायद कोविड की वजह से फ्लाइट्स पे कुछ मसाइल आए होंगे, अदरवाइज तो आदमी हैरान रहता है कि इतनी फ्लाइट छूट रही है। ठीक है, दुबई नहीं एयरपोर्ट पे तो अगर आप सर जी सर इसमें ये क्यों लिखा है वी डू नॉट हैव
क्वालिटी एज अ गोल, मतलब गोल ही हुआ ना उसकी वजह क्वालिटी, उसकी या वजह फिर ये कि उसकी वजह ये कि अगर आप उसमें गोल रखते हैं तो गोल अचीव हो गया तो खत्म, फिर खत्म। अच्छा, सही है। ठीक है। तो सर्वाइवल के लिए क्वालिटी आ, इम्पोर्टेंट है। उसकी वजह है कि वो जो नहीं, दूसरा उसने आगे देखा ना कि कॉलन है, उसके बाद देखेंगे कि सर्वाइवल इज नॉट कंपलसरी, ठीक है। आप क्वालिटी देखेंगे सर्वाइवल इज क्वालिटी सर्वाइवल इज द कंपलसरी, इसलिए मैंने एग्जांपल दी ना कि यस पीआईए सर्वाइव कर रही है ना, जी। लेकिन वेंटिलेटर पे है, लेकिन जो एमिरेट्स है हम्म वो वेंटिलेटर पे तो नहीं है ना, दूर दूर तक नहीं है वो, दैट इज थ्राइविंग, मल्टीप्लाइंग यस इट्स बिजनेस, ठीक है। तो हम्म वही मैंने एग्जांपल दी कि आप अगर वर्चुअली जो उस पर देखें फ्लाइट लोकेटर को, अगर आप वो आइडेंटिफाई करना चाहें फ्लाइट को, और आप देखें कि दुबई एयरपोर्ट से फ्लाइट्स कितनी उड़ रही हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, तो आप हैरान रह जाएंगे। आप में से जिन लोगों ने ट्रेवल किया और जिन्होंने दुबई एयरपोर्ट पर वो वहाँ पे स्टे किया, तो देखें कि वहाँ पे 1 मिनट के अंदर कितनी फ्लाइट टेक ऑफ कर रही है और कितनी फ्लाइट जो सी है ना वो लैंड कर रही है, आपको लैंड हैरान कर हो रही जाएगा है। जो, ठीक है। और आप यहाँ पे चले जाएं अब लाहौर एयरपोर्ट पे, तो आप वो उनका बोर्ड पढ़ लें अराइवल का, डिपार्चर का, जितने की 4 5 या 6 फ्लाइट्स होती है, सी। और ये यानी कि ना अब तो जाहिर है कि पेंडेमिक का उसमें इम्पैक्ट आ गया, अदरवाइज नॉर्मल डेज में भी तो बहुत ज़्यादा नहीं होते थे, वो एयरपोर्ट देखे कितने बिजी एंड हाउ मच दे हैव डेवलप्ड एंड फ्लॉरिश देयर बिजनेस। तो कहने की बात ये है कि वो उन्होंने जो जब स्टार्ट किया तो इसी एयरलाइन ने उनको हेल्प आउट किया, पीआईए। अब आप पीआईए देखें वेंटिलेटर पे पड़ी और वो कैसे they are multiplying, they are developing, they are multiplying, they are getting new business, they are getting new plans, and they are, you see, using that capital into different, तो इसलिए हम हमारा काम, जो अगर हम क्वालिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने जो ये कोई गोल नहीं अचीव कर लिया और उसके बाद फिनिश, ऐसा हर किस नहीं है। ये कॉन्टिन्यूस आप देखें ना कि सारी की सारी चीजें किसको लिंक कर रही हैं, ठीक है। उसकी बजाय कि दिस इज नॉट अ गोल, दिस इज एन फील्ड, दिस इज एन एनवायरनमेंट, दिस इज आवर सेटअप, दीज आर द प्रोसेसेस व्हिच कीप्स ऑन गोइंग, ठीक है। इसका मतलब है कि ये दिस इज समथिंग व्हिच इज डायनामिक, व्हिच इज नॉट स्टैटिक, और इसी वजह से इसको जो नाम आगे इसको लिंक कर रहा है वो ये जो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट है, ठीक है। What quality is quality is continuous improvement in that particular product or that particular service. तो अगर वो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट नहीं है तो फिर आप देखें कि अगर आपका जो टेलर है वो आपके बेहतरीन और कीमती निशात वूल के सूट को सतना फेर देता है, तो आप उसके पास कभी भी नहीं जाएंगे। इसका मतलब है कि उसने लर्न ही नहीं किया कि अब अगर वो पिछले साल के फैशन पे ही खड़ा हुआ तो उसको पता ही नहीं है कि अब क्या ट्रेंड है और उसने क्या ट्रेंड सेट करना है, तो इसका मतलब है कि वो उसने अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया है, ठीक है। आप देखें कि जो जब गवर्नमेंट बेकरी बनी तो कैसे जो लोग हैं उसके ऊपर टूट पड़े थे और उसकी प्रोडक्ट्स पे, बट यू सी कि अब उसके मुकाबले में कितने कम्पेटिटर्स आ गए, एंड वी आर सीइंग इन द मार्केट दैट बेकरी इज सर्वाइविंग एंड थ्राइविंग, जो कि अपनी चीज़ों अपनी प्रोडक्ट्स में सर इम्प्रूवमेंट लेकिन लेके आते हैं। क्वालिटी के बगैर भी बहुत सारे ब्रांड सरवाइव कर रहे हैं, जैसे आपने गोरमे की एग्जांपल दी है। लेकिन वो देखे ना वो सर्वाइवल है, हाँ जी। हम सर्वाइवल इज नॉट कंपलसरी, ठीक है। सर्वाइवल तो फिर पीआईए भी तो सर्वाइव कर रहा है ना, सही बात बट है। लेकिन वो सर्वाइवल कैसा है, जहाँ पे लोगों को हम्म रोज, यानी कि जहाँ पे कुछ ट्रैवल करना पसंद नहीं करता और लोगों को रोज धड़का लगा रहता है कि अब उनकी नौकरी जाएगी, अब उनकी नौकरी, हम्म इट इज सपोज्ड टू बी थ्राइविंग, जी। कि जहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है बिजनेस, ठीक है। हम्म तो आपके सामने है, देखें कि अगर 30 साल पहले तक कोई पब्लिक स्कूल नहीं था, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं थी, नाउ यू सी हाउ मेनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आर अराउंड, हाउ मेनी प्राइवेट स्कूल्स आर अराउंड, they are multiplying, जी। but in the public sector the institutions are not multiplying, okay. And we know the quality as well, the where we can get the more quality, I mean ये comparable चीज है, ये कुछ छुपी हुई चीज नहीं है। सो वो चाहे कोई भी सेक्टर हो, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, और एनी एंटरप्राइज हो, इफ दैट इज नॉट on this model of continuous improvement, that organization will vanish again. जैसे कि अगर हमारा डेंटिस्ट या हमारे डॉक्टर को, हमारे लॉयर को, इनको पता ही नहीं है कि जो लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या हैं, ठीक है, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हैं, लेटेस्ट इलाज करने के तरीके क्या हैं, ठीक है, तो
हमारे टेलर को अगर नहीं पता कि लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या चल रहा है तो हो सकता है कि हम उसके पास जाए, हम उसके पास जाएंगे जो कि इन चीज़ों की तरफ देखता है, और जो अ, हमारा हमारा जो हमारे लिए जो गारमेंट तैयार करता है वो ऐसे होते हैं इनोवेटिव कि वो पता चलता है कि ये वहीं पे खड़ा नहीं है जहाँ पे आज 2 साल पहले था, बल्कि ये कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव करता है। तो हमें अगर अगर क्वालिटी ये है तो हमें फिर ये देखना पड़ेगा एजुकेशन जो है उसके कस्टमर कौन है। ठीक है, हु इज और आर कस्टमर इन एजुकेशन एज अ प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज, कौन हो सकते हैं कस्टमर एजुकेशन? Students. 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 और Parents. पेरेंट्स, यस। ठीक है, education and its customers, education value added is equal to the services to learners, the learner कौन है? प्राइमरी एक्सटर्नल कस्टमर, प्राइमरी एक्सटर्नल कस्टमर लर्नर है, स्टूडेंट। पेरेंट, गवर्नर्स, एम्प्लॉय, सेकेंडरी एक्सटर्नल कस्टमर, लेबर मार्केट, गवर्नमेंट, सोसाइटी, टर्शियरी एक्सटर्नल कस्टमर। ठीक है, यानी कि लर्नर है, पेरेंट है, स्टूडेंट है, पेरेंट है, लेबर मार्केट, गवर्नमेंट, सोसाइटी है। ठीक है, तो और इसके अलावा जो थर्ड वन है टीचर, स्पोर्ट्स स्टाफ, ये इंटरनल कस्टमर है। अच्छा, अगर अगर हम देखते हैं कि एजुकेशन, सॉरी, अगर हम ये देखते हैं कि एजुकेशन ये है कि जिसमें हमें कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट की तरफ जाना है, तो अ, हमने जैसे अभी जिक्र किया, तो हमें ये डिफाइन करने की ज़रूरत है कि जो एजुकेशन है वो बेसिकली उसमें होता क्या है, वो प्रोसेस क्या है। तो आपके सामने जो ये स्लाइड पर खुली हुई है वो आप देखें कि वो एक एक यानी कि मॉडल है उस प्रोसेस का जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में होता है। इंडस्ट्री में भी ऐसे होता है, लेकिन हम यहाँ पे देखें कि इंडस्ट्री का जो मॉडल है वो ज़रा सिंपल है। ये मॉडल, इसका जो प्रोसेस वाला स्टेप है, जो ट्रांसफॉर्मेशन दरमियान वाला है ब्लू कलर में, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये क्यों कॉम्प्लेक्स है? क्या आप में से कोई बता सकता है? इंडस्ट्री में ये जो प्रोसेस है ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लग रहा है, इसकी क्या वजह है? जी जवेरी। Sir, because in education we have human beings who have feelings, psychology, different attributes, different interests. But in industries we have raw materials, we have to convert them into products, and that's all. And I have to sell them, and that's all. But you see that the process is also taking place, and the human interface is also there, where they are in the process. Human interference is also there. I mean that raw material is supposed to be converted into that desired output, and in between both of them, the process is still there, and the process is also, you see, having that interface, which is a human interface. जी, Sir. yeah, Sir, can you? go Sir, ahead. the point is that in like education, we're dealing with humans, and humans have different like cognitive thoughts, and all like they have like complex body system for nourishment and for getting to a desired output. But in products, they are like non-living things, and non-living things don't have any emotions or any attributes or things like that. आप अगर एक जो शू बनाने की फैक्ट्री में चले जाते हैं, ठीक है, शू का हमें पता है रॉ मटेरियल क्या है, आप Yes. उसको प्रोसेस में डाल देते हैं, प्रोसेस में क्या ख्याल है वहाँ सारे रोबोट काम कर रहे हैं? No humans. ह्यूमंस हैं ना, तो इट्स मीन कि जो आपने चीज़ें कही वो वहाँ पे भी किसी हद तक हैं। Sir, but those humans are working, not we are not like nourishing them or developing them. But But here they in need, education system, we are educating them. okay, it's mean that in that case the humans, they are dealing with the material, and Yeah. we in our case we are not dealing with the material. Yeah, the point is we are dealing with the Human being. living human beings with emotions, with different Oh like yes, activities. yes. So this could be one of the difference from in both of the scenario, that in the industry the humans could be there in most of the cases, and yes, in some of the cases minimum human interference is there, and most of
most of the processes are carried out by the robots. For instance, in case of the automobile industry, you see, in automobile industry, yes, they are incorporating more robots in the manufacturing of the vehicle, and they are systematically eliminating the human interference in that. And because um, once the skeleton is in the supply line, and then when the things are available, then the robots they work very well, and they work with the more efficiency. And, you see, and with the सर थोड़ा आहिस्ता बोल रहे हैं क्यों क्यों है? सर आप स्पीड में बोल रहे हैं तो आप स्पीड के साथ सुने हैं, और कहीं स्पीड नहीं चलाती हूँ। 10 जरा खाने की क्या स्पीड है Sir, there's आपकी? सर जीरो इतना जीरो मुश्किल लगता अच्छा चलो मैं ऐसा बोलता हूँ। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि आप देखें ना कि जो रोबोट्स हैं उनकी तरफ काम करना है ना, उन्हें भूख लगनी है, ना उन्हें वो ना उन्हें तनख्वाह बढ़ानी है, ना उन्हें तनख्वाह चाहिए, तनख्वाह तनख्वाह ना उन्हें हड़ताल पे जाने। ठीक है, दे दे आर गिवन इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ डिजिटाइज्ड इंफॉर्मेशन, एंड दे आर सपोज टू डू वर्क अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो सप्लाई चीज़ों की सप्लाई मेंटेन रहेगी तो दे कीप ऑन वर्किंग। बट यू सी कि आपने दुरुस्त कहा कि जब जो एजुकेशन के अंदर एनवायरनमेंट है, इनपुट तो है, और इनपुट यहाँ पे रॉ मटेरियल उस तरह नहीं है, यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स आ रहे हैं आपके पास, वहाँ पे जो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, जिसको यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस कहा गया है। ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए क्या है कि वहाँ पे उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। बट यू सी एट द कोर ऑफ दिस सिस्टम इज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, लेकिन वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बाहर का जो प्रोसेस है वो देखें कितना कॉम्प्लेक्स है, तो बिल्कुल दुरुस्त का कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, उसमें देखें क्या है, स्ट्रक्चरल सिस्टम में ब्यूरोक्रेटिक एक्सपेक्टेशन है कि वहाँ पे लोग काम कैसे करें। हो सकता है वो ब्यूरोक्रेटिक हो सकता है वो डेमोक्रेटिक हो। ठीक है, या इन बिटवीन द ब्यूरोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक। उसके बाद वहाँ का कल्चर कैसा है, वर्क कल्चर कैसा है। वर्क कल्चर किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। अगर वर्क कल्चर इस तरीके का है कि आपने काम आप जिम्मेदारी से करना है, और उसके अंदर जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करना है, उसके अंदर जो एक उनकी एक जो टीम वर्क को प्रमोट करना है, कोहेजन और कंसेंसस की बात करनी है, आपने एक कोलैबोरेशन की बात करनी है, तो वो देखा ना वर्क कल्चर के कैसा कल्चर सिस्टम कैसा होगा। तो इसके ऑपोजिट जो कल्चर सिस्टम है, ये भी तो हो सकता है ना कि आपने सिर्फ अकेले काम करना है और किसी के साथ शेयर नहीं करना। कोग्निशन एंड मोटिवेशन क्या है, इंडिविजुअल सिस्टम, कल्चरल सिस्टम के बाद इंडिविजुअल पे लोग अपनी जॉब को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, वो अपनी जॉब से रिलेटेड अपने आप को कैसे डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, हाउ व्हाट इज देयर सेल्फ एफिकेसी, either they are at the height of their self efficacy or at the least level। पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, वहाँ पे जो एक लीडरशिप है वो कैसे फंक्शन कर रही है, वो जो कैसे लोगों को एम्पावर कर रही है, वो लोगों को कैसे जो वर्क स्ट्रक्चर कैसे बनाया हुआ है। सो यू सी कि देयर आर सो मेनी थिंग्स जिन में से वो फिर अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट किस पे होता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के जरिए वो स्टूडेंट पे हो रहा है, और वो देन वो स्टूडेंट वो आउटकम की शक्ल में हमारे सामने आ रहा है जो कि ग्रेजुएट हो रहा है उससे। सो यू सी कि एजुकेशन के अंदर जो क्वालिटी को मेंटेन करना है वो क्यों चैलेंजिंग है, कि आपने ये जो ट्रांसफर राइट फ्रॉम इनपुट से लेके जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है, इसको कंट्रोल करना है, तो फिर आपके सामने वो आउटपुट आएगी जिसको आपने एनविजन किया होगा। दिस इज नॉट अ सिंपल प्रोसेस, वेरी सिंपल प्रोसेस। ठीक है, इन वन इंस्टीट्यूशन वन स्कूल यू माइट हैव टीचर्स विद डाइवर्स abilities, with diverse teaching expertise, with diverse understanding of the needs of the students, and so many other things। तो ये इनको कंप्यूटर उनको रोबोट की तरह डिजिटाइज नहीं किया जा सकता कि आप ये सारी की सारी, इवन कि आप उनको अगर बने बने लेसन प्लान भी दे दीजिए तो फिर भी वो किसी भी सूरत में उनका इम्पैक्ट एक जैसा नहीं हो सकता, इम्पैक्ट हमेशा डाइवर्स ही रहेगा। जी Sir, there was also this point that Javeria had mentioned how in industries or in organizations which are in the factories, so they're since they're being mechanized, there's less focus on the human factor. So in educational system, it's more about this like giving the service that is tailor made to your customers, that is the students and the parents.
one standard educational system cannot apply everywhere, like in factories and industries. उनका standardized procedure होता है in the factory lines or in the secondary sector, etc. But for education, you need to tailor make it according to the culture that is going on in that country, according to the educational literacy rate that is in that country at the moment, and जो services provide करने हैं. Is there more focus on STEM subjects like science, engineering, law, or any of Mathematics, those technology. premium, arithmetic, exactly, sir? Or is it more focus on art subjects? So ऐसे ही liberal colleges, liberal arts universities, engineering, technology universities बन जाते हैं, and all the sectors. So you have to make your education tailor-made to the culture, to the customs, and the mindset of where that particular country, that town, or even that community is working towards. जैसे indigenous tribes होते हैं, तो the only teach कर रहे होते हैं. So those type of education has to be more tailor-made to their type of skill set, that type of knowledge that is required for them, like in the um, indigenous tribes जो ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, जो नॉर्थ अमेरिका में होते हैं, मेक्सिको में होते हैं, तो like that you have to tailor make it that it will serve their purpose for their future careers, like that. Yeah, you are very much right that it's mean that just try to conceptualize the processes which are taking place in education institutions. Although the process is similar, in this way that it is a process where the input is being processed. Okay? But you see what is happening inside, it is not that much simple, which most of the people who are who don't understand education, they believe that it is not very simple process, much complex, much complex. उसके जैसा बनाना है जैसा ऑर्डर आता है. हाँ, जैसा ऑर्डर आता है वैसे ही बनाना है. वो जो ऊपर आ रहा है ना उसके जैसा बनाना है. हाँ, उसकी वजह है कि अगर आप वो जैसा नहीं बनाएंगे तो फिर वो स्टैंडर्ड मेंटेन कैसे होगा है. आगे क्या करना है? येलो कलर डाल. ये अल्लाह का वास्ता म्यूट कर दो. इंजीनियरों से था. सर इसको पता ही नहीं लग रहा. नूर रियाज का अनम्यूट है. इसको बताते हैं. ईमान. जी सर. सॉरी सर, वो गलती से हो गया था और वो हो ही नहीं रहा था. अच्छा, म्यूट हो गया, म्यूट कर दो शाबाश. सर मेरा नहीं था ये. अच्छा चलो ठीक है, सॉरी. Okay, so I mean, from this we can, from this diagram we can visualize that what is supposed to be quality in education. ठीक है, right from input से लेके जब तक के process के अंदर आप उसको built in नहीं करेंगे और उसको continuously उसकी improvement की तरफ नहीं जाएंगे. So for instance, if I say that what is the best method of teaching, I mean it's very hard to define what is the best method of teaching. I mean you see कि the students in, अभी हमने ये कुछ वीडियोस में देखा कि वो बात कर रहे हैं कि जो इनइक्वालिटी है उसको ब्रिज करने की जरूरत है, इक्विटी की बात कर रहे हैं. इसका मतलब है कि अगर इनइक्वालिटी और इक्विटी, अगर हम इक्विटी को खाली ले तो इसका मतलब है कि हमारी जो इंस्ट्रक्शन है वो स्टैंडर्डाइज हो ही नहीं सकती. ठीक है, बिकॉज द स्टूडेंट्स विच आर इन फ्रंट ऑफ अस दे आर हैविंग डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस. ठीक है, तो यानी कि हमें ये कोशिश करनी है कि हम उनकी एक्सपेक्टेशन पे पूरी उतरने की कोशिश करें. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टैंडर्डाइजेशन ठीक है, कुछ चीज़ों की आप कर सकते हैं, लेकिन आप सारी चीज़ों की स्टैंडर्डाइजेशन नहीं कर सकते. अगर आप ये कहते हैं कि आपने स्टैंडर्ड के मुताबिक बात करनी है, स्टैंडर्ड के मुताबिक चलना है, तो इसका मतलब ये है कि जो बच्चे उस स्टैंडर्ड को के साथ कंप्लायंस करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, वो फिर वहाँ पे क्या करेंगे. और दूसरी तरफ हम प्रोपोनेंट बनते हैं कि हमने जो इक्विटेबल एक्सेस है वो देनी है सबको, और जो एजुकेशन सिस्टम है ऐसा होना चाहिए कि वो जो डाइवर्सिटी है जो एक स्टूडेंट बॉडी के अंदर, उस डाइवर्सिटी को वो टैप करें. ठीक है, अच्छा आउटपुट क्या हो सकती है एजुकेशन की? आउटपुट क्या है? आप चूंकि मुस्लिम ग्रेड लेवल से ग्रेजुएट होकर निकले हुए तो आप जी Civilized human beings, I think that would be the best example, sir. ओके, सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग. और बताएं शाबाश, क्या एक ही आउटकम A है? well mannered society. What else?
So educated society. What else? There are diverse thoughts को लेके आए ना अपने cognitive structure में. फिर सोचो कि एजुकेशन का जब ये प्रोसेस होगा तो उसके आउटकम्स क्या हो. Poverty will decrease. Okay, what else? Literacy rate will increase. Okay. I'm glad that you are thinking on the diverse ideas. It's wonderful. What else? Sir, positive change. किसमें? Sir, The better communication skills. एक मिनट. Oh yeah, wonderful. Better communication skill. लेकिन positive change आपने ठीक है, लेकिन किसमें? सर जो एजुकेशन ले रहे होंगे उन्हीं में. सिर्फ उनमें जो Health एजुकेशन में. दे रहे हैं. सर जो ले रहे हैं. जो दे रहे हैं उनका उनके वाले से भी कोई आउटकम हो सकती है. सर उनका भी तो Sir, होगा. सर जो उनका एजुकेशन एक्सपीरियंस देते बढ़ हैं रहा they है gain. शाबाश, उनका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है. What else? और सर डिसिप्लिन आता है एजुकेशन से आपके अंदर. डिसिप्लिन आता So है. you always gain by learning. You You never gain. lose. You always gain by teaching. ठीक है. Teaching is basically learning. ठीक है. सर और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा बढ़ती हैं व्हिच शाबाश. लीड्स टू लेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पॉवर्टी. आपके लिए भी बढ़ रही है. स्टूडेंट्स तो ग्रेजुएट हो रहे हैं उसके लिए तो है, लेकिन आपके लिए भी बढ़ रही जी. सर इकोनॉमिक प्रेशर भी तो कम होता है. है. इकोनॉमिक प्रेशर कम होगा. जी अरोमा मुस्तफा, डेवलपमेंट होगी. कोई आउटकम बताओ. डेवलपमेंट होगी. शाबाश. सर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो सकता है. कैसे? ठीक है, आई एग्री. सर इस तरह फिर वो चाइल्ड मैरिजेस और इस तरह के जो मसले हैं वो भी खत्म होते हैं, कम होते हैं. इसका मतलब है कि जो सोसाइटी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है. ठीक है. जी जी. क्या डेवलप सोसाइटी अवेयरनेस मुख्तलिफ चीजों के बारे में. हाँ. तो यू सी कि अब आप देखें ना, आपने थोड़ा सा डाइवर्स होकर सोचा तो कितने सारे जो आउटकम है आपके सामने आए. और ये सारे एजुकेशन के जरिए तुम लेते हैं. ठीक है ना. सो यू सी के जो आउटकम्स और आउटपुट्स ऑफ एजुकेशन है, हम तो ये समझते हैं कि वो जो ग्रेजुएट है सिर्फ वही एक आउटकम है. ऐसा नहीं है. सो मेनी आउटकम्स आ रहे हैं. टीचर्स की प्रोफेशनल डेवलपमेंट हुई है तो वो दैट इज एन आउटकम. टीचर्स का एक्सपीरियंस बढ़ा, दैट इज एन आउटकम. आप देखेंगे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की रेप्यूट इन द सोसाइटी है, दैट इज एन आउटकम ऑफ दैट प्रोसेस. ठीक है. सो यू सी कि एक वाइड रेंज ऑफ जो आउटकम है वो इसके जरिए, एजुकेशन के जरिए हमें मिल रही है. अच्छा जी. अच्छा, ये मैं आज नहीं पढ़ाऊंगा. ठीक है. मैं आपको उसकी वीडियो दिखाऊंगा बस. और हम ये नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे क्या है. आज जरा इसको आप वीडियो की मदद से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. कौन सी छुट्टी? छुट्टी कितने बजे? 6:30. छुट्टी कितने बजे? 6:30. कभी 6:30 जल्दी भी बजे. छोड़ दिया करें. क्यों? सर पहले अटेंडेंस ले लेना. फ्री कर दें. सर पहले अटेंडेंस ले लें. जल्दी फ्री क्यों करूं? सर आपने क्योंकि पढ़ा सर था आप क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं. सर बाकी टाइम हम कुछ और कर लेते हैं. सर आप अटेंडेंस कुछ और ले क्या लेना करेंगे? पहले. कुछ और क्या वो सर करेंगे? आप मतलब आप कुछ करवा देना. मैं ही करवाऊंगा. नहीं सर पढ़ाई नहीं ना. असाइनमेंट्स. अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, वो हमारी जीआर कहाँ है? वेयर इज सर आवर यहाँ पे ही जीआर? होगी. यस यस सर. क्या हाल है आपका? ठीक है. टाइम है. यस सर. आई एम फाइन आल्सो. अच्छा मलाइका, वो जो पिछली प्रेजेंटेशन मैंने पोस्ट की थी ग्रुप में. नो सर. You had not posted the presentation. अच्छा, मैं ना आपको अभी कर रहा हूँ और उसके ना एंड में मैंने टॉपिक्स दिए हैं. Yes sir. एक मिनट, मैं ना अभी आपको
कोई प्रेजेंटेशन देने लगे हैं? जी मैं आपको टॉपिक्स देने लगा, याद है ना पहले डिस्कस किया था, तो मैं आपको टॉपिक्स दूंगा। यस सर। गुड हो गया सर जी। सर आप असाइनमेंट दे रहे हैं प्रेजेंटेशन? यार प्रेजेंटेशन दे रहे हैं दोनों में सर। फर्क क्या है? असाइनमेंट भी और ओके प्रेजेंटेशन भी की चीज है ना। सर प्रेजेंटेशन जो हम बोलते हैं और असाइनमेंट बसन्ने वाली लिखी जो। नहीं जी असाइनमेंट भी आपने सुन मैंने सुनना है बस, ठीक है, नंबर सुनने के होंगे। सर ग्रुप्स में होगा या इंडिविजुअली देंगे प्रेजेंटेशन? सर वो तो फिर क्विज हो गया। क्विज थोड़ी है यार वो देने तो, तो दो सर वो तो को। जब मैं क्विज लूंगा तो आपको पता चलेगा दोनों में फर्क क्या है। अच्छा 1 मिनट में आपके ग्रुप में पोस्ट कर रहा हूँ ये। एक मिनट सर, क्या देने लगे हैं? कुछ खैरियत का दीजिएगा। लड्डू दिखलाने लगा। सर थोड़ा कम दीजिएगा। सर मजेदार दीजिए। हाँ बहुत तो मजे बहुत का। ज्यादा तो हम लोगों के यस साथ सर हो गई इंटरेस्टिंग है। है बहुत। इंटरेस्टिंग हाँ सर। इंटरेस्टिंग हो रहा है, आई इंटरेस्टिंग। एग्री विद दिस। यस सर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है। बस कर दो, जब मिला ना तो सारों की हवाएं उड़ जानी। अच्छा मैंने आप लोगों को ग्रुप में भेज दिया, ठीक है। मैंने जो भेजा है ना वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने लगा हूँ। मलाइका वो मैंने ना ये किया है कि जो मेरी लास्ट प्रेजेंटेशन थी ना साइकोलॉजिकल फाउंडेशन के वाले से, ठीक है, उसमें मैं इसको खोल लेता हूँ। Let me share it with you. मैंने आज की भी उसमें भिजवा दी और ये भी भिजवा दी, ठीक है। तो बेसिकली करना क्या है, इसकी अगर आप लास्ट स्लाइड पे आएंगे, या here, ठीक है, टॉपिक्स आ रहे हैं ना। यस सर। जी यस सर। ये टोटल है 26, ठीक है, और आप लोग कितने हैं टोटल? 70 सो समथिंग, 780 हैं। 71। 70 के राउंड अबाउट ही हैं। 77 76 77 ठीक है। 70 तो ये हो गए ऑलमोस्ट 80। 26। चले हम 80 कर लें, अगर 80 यस सर। डिवाइडेड बाय सर 26 आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक। फिर क्या किया जाए। अब आई? यस सर गला यू तो आर साफ है क्लियर। मेरा, गला साफ है मेरा। अच्छा ये आपने टॉपिक लेने हैं, ये 26 टॉपिक्स हैं, लेकिन आप बताएं कितने तो ये बनेंगे। सर हम ग्रुप्स में दे देंगे ना। थ्री सर ये पर्सनली बने। सीआर को बोले, सर हम ग्रुप खुद बना ले। सीआर बनाएंगे सर हम ग्रुप खुद बना ले ना। सर प्लीज। तो सर सीआर आप प्लीज बना लोगे ना। सर इट्स बेटर, सर इट्स यार बेटर हमसे कि पूछ आप के खुद ही बनाना। बनाएं। सर सीआर के लिए यार मुश्किल हो जाएगा मलाइका, यस सर। सर। मलाइका, यस सर सर हमारे इट्स ऑलरेडी जो ग्रुप बने हुए हैं मलाइका। पहले ही बने हुए हैं। सर अच्छा मैं खुद सर इससे you बनाऊंगा, can ओके। see it. Yes नहीं yes सर, you can make yes sir. मलाइका तुम सर ग्रुप में हमारे आओ, पहले तुम्हें मैं बताती हूँ, तो बस सर को स्लाइड कह हो रहे गई। खुद के तो बनाए। सीआर को सेंड कर देंगे। सर नहीं मेरी नहीं बात नहीं सुने, नहीं सर मेरी सर बात सुने। सर सर मलाइका सर बना हमें खुद देती है, ग्रुप ओके। बनाने दें। यार It's सर को better बोल if मैं you डालूंगा, दो, make। सर को और बोल लिसन देने टू दो। मी, मैं सबको सर के माइक नहीं तो बंद कर दूंगा। जी मैं सर ये मैं यस डालूंगा सर। पर्चियां डालूंगा और Okay. पर्चियां निकाल के मैं ग्रुप बनाऊंगा, ठीक है। Yes sir it's सर better. अब ओके सर सर। बादशाह कैसे वसील नहीं निकालेंगे? खेलना। सर आप भाषा वजीर 80 होगा मेरी उसमें, आपके 80 उसमें बच्चों के लिए पर्चियां निकालेंगे। कोई नहीं। मैं सर आप मुझे बच्चों के लिए नेक्स्ट काम करना स्लाइड शो है, सर आप बहुत करें। लिखेंगे मजा आता है। आपका टाइम जाया होगा सर को पर्चियां भी कोई बोलने निकालने का मसला नहीं मौका है, दे सर मेरी देंगे। मेरा सर कोई अपनी टाइम मर्जी नहीं से जाया होगा। लेंगे। मैं पता है क्या करूंगा, एक्सक्यूज मी मेरे सर। सर पास मेरी ये बात सुने, मेरे पास सर मेरी मेरे बात पास सुने। आप मेरे पास सर को आपके तो नाम बोलने दो। टाइप हुए हुए हैं। मैं एसपीएसएस में डालूंगा और उसे कहूंगा कि मुझे 3 दिन के ग्रुप निकाल दे, एसपीएसएस 3 सर दिन के ऐसे ग्रुप तो ना निकाल करें देता हम। है। सर तो सर ऑफिस आप तीन खुद तीन के देंगे। सर सर मेरी नहीं बात प्लीज सुने, ना सर करे। ना सर मेरी करें सर बात प्लीज। अच्छा हम सुने, ये आपको मेरे अभी सर हमारी मेरी मैं बात क्लास सुने, सिर्फ बिल्कुल बुला भी बात। के बता देते कोऑपरेटिव हैं। नहीं है, ना करें, हम किसी को भी सर नहीं। प्लीज बीरज ऐसे चुप ना हो करें सर, जाओ। ये तो ज्यादती सर है। कैन यू शो द नेक्स्ट ऐसी बात स्लाइड। नहीं है। हाँ अच्छा मैंने आपको स्लाइड्स भिजवा दी हैं, आप उसमें से टॉपिक जो थे ना वो देख लें। तो और आप सर आपकी बात की समझ ही नहीं आ रही, इनसे कहें प्लीज 2 मिनट के लिए चुप कर जाए। चुप ही है सारे बरीगा।
ये बच्चे कहाँ बोलते हैं, ये तो मासूम बच्चे हैं, इनके तो जमाने कोई नहीं है। सर टॉपिक आप खुद असाइन करेंगे प्रेजेंटेशन का? अच्छा नहीं, जो हमारा दिल करेगा वो करेंगे हम लोग। अच्छा, मुझे ना आप मलाइका ये क्लास के बाद मुझे आप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा इसका क्या तरीका करना है, ठीक है? ओके सर। ओके सर। अच्छा, दूसरी मलाइका। चीज ये कि यस सर। ये मलाइका को थ्रेट्स मिल रहे हैं, बाहर आ जाए। ये चैट भी सेव ग्रुप हो में रही है। ग्रुप में आओ ग्रुप में आओ फिर बताएंगे। हैं? ये चैट भी ना सेव हो रही है ये, ठीक है? सर तो मलाइका आप हमारी मलाइका बहुत अच्छी घबराना नहीं सलाह है, है। ये जिसने No, जिसने मलाइका sir. हमारी जिसने Sir, it's जिसने भी better मलाइका। if yes, sir. If we shuffle all the students, it's better. Like, हाँ sir. नहीं नहीं, मैं शफल मैं ऐसा यस शफल सर, Yes, करूंगा sir. कि भी आप करना अपसाइड टॉपिक डाउन भी कर खुद Yes, ही। दूंगा। sir. Yes, सर sir. टॉपिक मतलब भी खुद ही दे दीजिएगा। like मलाइका alphabet types आप मत करिएगा क्योंकि नहीं it's so प्लीज, much problem. अल्फाबेट टाइप Shuffle ना करें. कीजिएगा या। अबीरा कह रही Yes, है sir. मेरा सर पुत्र वैसे आ जा ग्रुप्स तू आज। कितने कितने मेंबर्स क्यों नहीं है? Yes, sir. यस, शफल इज Sir. बेटर, समन कह Yes, रही sir. है, It's ठीक है better. ठीक है ना? हाँ अच्छा ठीक है भाई, हमने बात मान ली है मलाइका की और समन की, सर और ये मलाइका इसको की मैं बात शफल नहीं माननी चाहिए थी आपको वैसे। क्यों नहीं माननी चाहिए? आपकी वो रिप्रेजेंटेटिव है, सर वैसे अवामी मलाइका बहुत नुमाइंदा है। अच्छी है। सर वैसे आप लोगों ने मलाइका अपने वोटों बहुत अच्छी है। आपने अपने Thank वोटों you से so उसको much, सिलेक्ट किया Kuzema. है, I know कि मुझे बाद में बहुत कुछ ठीक है ना? सुनने को मिलेगा. आपने अपने वोटों से उसको सिलेक्ट किया है, तो आप सबकी मलाइका वो तुम आ जाओ रिप्रेजेंटेटिव है वो। जरा, तुम्हें सर मैं आप इतने अच्छे हैं और आप हमें क्यों नहीं खुद खुद ग्रुप बनाने दे रहे? सर नहीं, मेरी बात सुने, सर मुझे एक पता है बात कि तो आप बहुत सुनिए। ज्यादा अच्छे हैं नहीं और आप बहुत सर, सारे नहीं किस्म के ग्रुप सर, बनाएंगे। सर मेरी बात नहीं सुन ले सर, हम प्लीज। नहीं एक बनाते बात, ना। एक मिनट यार, एक मिनट मेरी बात सुन ले सर। सर बाकी सारे टीचर्स ने हमें ये कहा था कि आप लोग 5 मेंबर्स हो जाओ और मुझे नाम भेज दो। हम लोगों ने उन्हीं यस 5 सर। मेंबर्स के नाम भेज सर दिए हमें थे। तो मैं और ऑलरेडी आप, मैं बने बाकी भी हैं टीचर ग्रुप। नहीं हूँ, सर मैं आप सर बाकी आप बहुत टीचर Yes, नहीं sir. अच्छे यस हैं। सर, मैं सर आप आप खुद तो से बिल्कुल बढ़ा अच्छे दें हैं। खुद Yes, ज्यादा सबसे बेहतर। बहुत अच्छे हैं। मैं yes, sir. अच्छा आप इन इसके सबसे इसके अब बहुत कोई अच्छे हैं. डिस्कशन, अब इसकी कोई डिस्कशन नहीं होगी, और मैं अब अटेंडेंस कॉल कर रहा हूँ। अबीरा, Okay, ओके sir. सर। अलीमा, अलवीना, आमना, अनिका, अच्छा मैं जो पहले सेशन में नहीं थे उनके नाम ले रहा हूँ कि वो भी हैं कि नहीं है। कायनात, नवाब, Sir, Anika is present on the first section. ठीक है। अभी भी रहमा, हो। रहमा तो है ही नहीं है, आ ही नहीं रही है। शगुफ्ता भी नहीं आ रही। तहरीम, फातिमा, बाकी सारे प्रेजेंट हैं। यस सर। आप क्या Yes, कह रही sir. थी? sir. अनिका, यस अनिका सर। क्या कह रही Yes, थी? sir. हाँ ठीक है, Anika Shakil. ये ठीक है। सर मैं यहाँ ही हूँ। She is still now. ओके ओके, आई हैव डन ऑल। अच्छा सो अब जो बेसिकली व्हाट द डैमिंग डैमिंग डज डैमिंग सर अभी डैमिंग पढ़ाना है आपने? थोड़ा बस मैंने आपको वो दिखाऊंगा शॉर्ट क्लिप, जो कि डैमिंग के 14 पॉइंट्स है ना वो। डैमिंग वाज अ गुरु हु यू सी डिवाइस्ड अ सिस्टम टू इंश्योर क्वालिटी इन इंडस्ट्री, ठीक है? और उसने जो जापान की जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई तो उसके बाद उसकी इंडस्ट्री तबाह हुई थी। तो डैमिंग बाय प्रोफेशन वो एक इंजीनियर है और वो अमेरिकन है। तो जापानीज ने उसकी हेल्प ली और उसने उसकी इंडस्ट्री को क्वालिटी वाइज ट्रांसफॉर्म करने में उनकी बहुत ज़्यादा मदद की। आप देखें कि अब तक एक स्टेज है कि हम जापानीज प्रोडक्ट जो है ना उनको सीख करते हैं, ठीक है ना? वाई? बिकॉज ऑफ द क्वालिटी विच दे विच इज एसोसिएटेड विद देम। तो अब गो के वो बहुत कम हमारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में इनमें तो नहीं आती, और वैसे भी वहाँ से बहुत सारी इंडस्ट्री स्कैटर होके दूसरे कंट्रीज में चली गई जहाँ पे लेबर सस्ती है। तो जापान में जो कि लेबर सस्ती नहीं है, बहुत महंगी है, तो इसलिए उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं कॉस्ट वाइज बहुत ज़्यादा है, जो कि जापान के अंदर बन रही है और फिर वो बाकी कंट्रीज में जो कि उनको अफोर्ड करते हैं वहाँ पे जाती है। तो हम जरा ये सुनेंगे कि डैमिंग क्या कहता है क्वालिटी के हवाले से, और नेक्स्ट टाइम हम इन 14 पॉइंट्स को जो कि उसने कहे इसको एजुकेशन में रिलेट करने की कोशिश करेंगे। उसने ये जो 14 पॉइंट्स कहे उसने वो ये एजुकेशन में नहीं कहे हैं, ठीक है? ये उसने इंडस्ट्री के हवाले से की है। तो हम इसको नेक्स्ट टाइम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये उसके जो एजुकेशन में इसकी इम्प्लीकेशन क्या है। तो बस थोड़ी देर बेयर विद मी, फिर इंशाल्लाह we will finish it. और मैंने भी बाय द वे मैंने इसको डैमिंग को कई दफ़े इसके पॉइंट्स पढ़ाए, लेकिन आज मैंने पहली दफ़ा इसको देखा है जब मैंने ये इंटरव्यू सुना। With better quality and Here's the lower timing. costs, you can capture the market with better quality and lower price.
It'll help you to stay in business, provide jobs, more jobs. It's all very simple. One has to know how to produce quality, what quality is, what's the ultimate aim, and quality goes all the way through an organization. It can be no better than the top, no better than the intent of the top people. That is Dr. Deming's single most important point. What needs to be done can be done only by top management. Professor Robert Reich, the Harvard economist who joined Dr. Deming and producer Claire Crawford Mason in this discussion, says that management too often thinks that reducing costs will solve the problem. There are a lot of ways to reduce costs, but that is not going to enhance our standard of living, because our standard of living is based upon improving the quality of our work and our skills, our skill bases, the value of what we do. The irony is that Dr. Deming's 14 points will, in fact, reduce cost, but that isn't the point. They will create jobs and provide better products and services for the consumer. Quality will go up, and so will our skills. Best of all, we can reverse the slide in our standard of living that has become noticeable. Point number 5 is continual improvement of processes. Finding what's wrong is not improvement of the process. If there were a fire here in this building and somehow we put it out, that does not improve the building. That's not improvement. That's putting out fires. People, it's very important to understand the difference between putting out fires, plugging leaks, and improvement of processes. One company I asked, what do you do about these problems? Well, we run it down to the bitter end, and even if we have to go to Brazil to find what happened there, we find it out. It sounds great. That's a path toward destruction, because they're not studying the system. They're managing outcomes, managing defects, instead of looking at the system that produced the defects. Point 5 sounds like point 3. Well, yes, in a way it does. Each of Dr. Deming's 14 points is implicit in all the others. The way not to depend on mass inspection, point 3, is to continually improve the process, point 5. To do that, you'll need quality supplies, point 4. If finding a quality supplier takes time, well, remember point 1, constancy of purpose. And also, remember to adopt the new philosophy, which just happens to be point 2. No one of Dr. Deming's points stands alone, nor did he intend that one should. The 14 points are one philosophy, an original way of looking at business and industry or anything else. But for our purposes, the 14 points are the body of knowledge that management needs to cure America's economic problems. And they have to be learned, because no one is born with that kind of knowledge. Point 6, training and retraining. Point number 6 is training and retraining of management and of people. It's no good to tell somebody to do something when he does not understand why. You could not even, you could tell me to wash that table. I would not know what to do if you don't tell me why, what you're going to use it for. You're going to eat off of it, it's clean enough now. You can use it for some chemical purposes, not at all. Dr. Deming's point is that not only must the workforce be trained to do the job, it must know what the job is and why it is being done. To put it another way, true leadership is not a matter of giving orders, but of giving explanations. Dr. Deming believes that the American workforce is the best in the world, the best educated, the most creative, but it must be led, not driven. Professor Rice says it's a matter of recognizing the worker's value. Your most precious possession is not your financial assets. Your most precious possession is the people you have working there, what they carry around in their heads, and their ability to work together. Dr. Deming says the best way to get workers to work together is to explain specifically what each person's job and responsibility is, then to divide the work into specific steps. Each person treats the next person along the line as the customer, who must be satisfied. Everybody as a customer in any organization, be it a laundry, bank, newspaper, manufacturing, education, no matter what. To do my work, I need to know who's going to use it. Whom am I working for?
in an organization. Who's my customer? Why am I here? What am I doing? And the customer, the next stage, must work with the preceding stage. Somebody put it so well, an anonymous contribution in one of my seminars. This I can do for you. Here's what you could do for me. Isn't that nice? When work is organized that way, it's easy to see that two basic beliefs of American management are simply wrong. Blaming the worker, right? In a way. The first belief is that if everyone did the job and worked hard, you'd get quality. But if the process is wrong, all the hard work in the world can't make quality. Make sweat. The second belief is if workers would pay attention and not make mistakes, all our problems would be solved. Won't work. Well, when Dr. Deming is asked about that, he asked people how they think Continental Illinois Bank got into trouble. You think that happened because of mistakes of tellers? Mistakes in calculating interest on penalties and loans? Do you think so? Does anybody think so? From operations? Nonsense. Those things are attributable to management. In fact, Dr. Deming says only 6% of the problems in industry can be traced to the workers. 94% are caused either by management or by the system. And since only management can redesign the system, only management can be blamed if it's wrong. Justice. Well, it's not exactly fair. Just as the workforce has to be trained, so does management. Leadership has to be better. Point number 7 is improvement of leadership, which we commonly call supervision. I think that it should be called leadership. Leading people to help them to do a better job, be it in management or on the factory floor. Supervision should be replaced by leadership. There's no secret, once again, about what leadership is. What leadership must do is to help people. Point 13 is self-improvement, program of self-improvement, education, improvement in other ways, helping people to live better, education in whatever one's fancy might take him into, history, music, archaeology, anything whatever. Keep people's minds developing. Education need not be connected with the work. Maybe better if it's not. Point number 6 is training and retraining for the job. Point number 13 is elevating people's minds. No organization can survive with just good people. They need people that are improving. And the problem is people at the top. In any profession, the good ones are hard to find. Help people to be good ones. But the education need not be connected with the work. Keep people's minds moving. Yeah. So, सर इतना अजीब एक्सेंट था इन अंकल का। सर जो पॉइंट्स समझ सर गए ये वो पॉइंट्स जॉब अब वाले आप समझ गए। सर ये पॉइंट्स आप बता दें क्योंकि नहीं, मुझे ये नहीं मैं समझ सारे में बताऊंगा इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास। ये मेरी इसी स्लाइड के अंदर मौजूद है जो कि मैंने आपको दी हुई। ठीक है, ये मैंने वो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया और यही नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। सो सर आप छुट्टी बेसिकली दे दें। एक्सक्यूज मी सर। सर ये प्रेजेंटेशंस कब तक करनी है, मतलब डेडलाइन या किस दिन होगी? बस ये 2 वीक्स इतनी देर, बस अगली क्लास से शुरू हो सर जाएगी। हमारी तो प्रेजेंटेशन हमें ऑलरेडी हो ऑलरेडी गई इतना है। तो बहुत ज्यादा तो काम मिला मिला हुआ है पहले से। अगली क्लास में ना रखें ऐसे करके प्लीज। बोलो सर नेक्स्ट क्लास बहुत टाइम लग जाएगा, टाइम मुझे दे दो। बताओ इस सर उम्र में ये सारे फ्यूचर साइकोलॉजिस्ट डिप्रेशन का शिकार हो शिकार हो गए ना। हाँ, यस। मुझे बताओ सर अभी हमें से QFC वालों ने अभी डिप्रेशन में ले गए हमें UMC अभी वाले ये सर। हाल है। अभी आप हाँ सही कह रहे है हैं। 20 साल आपकी उम्र नहीं हुई, अभी ये हाल है तो आगे जाके क्या बनेगा? ये तो बेहतरीन उम्र सर होती हमने है आप बचना मेरी ही बात नहीं है। खुलेगी 3-3 सर आप घंटे की मेरी क्लासेस बात बची सुनो। हमारी। सर 3 घंटे की क्लासेस, उसके बाद रोज सर जब कोई यूनिवर्सिटी असाइनमेंट खुलेगी तो 3 घंटे की क्लास प्रेजेंटेशन। होगी। हाँ हाँ
यार सर नहीं ब्रेक सर भी नहीं होगी, सर ब्रेक भी नहीं होगी। कमाल है, इतने मोटिवेशनल लेक्चर दिखाए और पढ़ाए, अभी तक ये हाल है आप लोगों का। आप लोगों ने पढ़ना है और बस पढ़ना है, पढ़ते पढ़ते मर जाना है बस। सर इसीलिए हैं? कहते हैं ना जब पानी से ज्यादा डर जाता है तो गिर जाता है। तैयारी करनी है सर, आखिरत की भी तैयारी करने का टाइम चाहिए थोड़ा सा। तो आप देखें, जब आप इल्म के रास्ते पे निकलते हैं तो जो फरिश्ते हैं ना अपने पर फैलाते हैं आपके सर कदमों के वो नीचे। दीनी तरीम के लिए खिलाते हैं, इस वाली ये तरीम तो की कम भाई खिलाते हैं। ये भी अल्टीमेटली आपको एनलाइटमेंट की तरफ लेके जा रही है ना, ठीक है ना, ये भी एनलाइटमेंट की तरफ लेके जा रही है। सर असाइनमेंट भी बना रही सर है। बेचारी सीआर की सुन ले, बेचारी कब से बोल रही है सर नहीं, सुन उसको तो ले। मैंने बता दिया है, वो मुझसे बाद में कम्युनिकेट करेगी, वो बेचारी थोड़ी है। सर आप भी कर ले। आपको सीधा करके रखेगी सबको इंशाल्लाह। हैं सर जी बहुत अच्छी जवेरिया, सीआर है छुट्टी माशाल्लाह करते से। हैं। जवेरिया शबीर, Sir, ये I बात want कर to रहा हूँ। request. Sir, I ओके want to request something. या Sir, please keep it that we can group by ourselves. We don't व्हाई want random grouping. व्हाई Sir, नॉट sir वो बहुत difficult हो जाता है. Please ऐसे भैया, ना करें. उसकी वजह ये कि सर यू आर वर्किंग सपोज टू मुश्किल हो यू आर जाती है बहुत। व्हाई यू आर सपोज टू वर्क इनटू डाइवर्स ग्रुप्स। आई मीन यू आर सर हम सपोज टू डाइवर्स, वर्क। सर हम हर सब्जेक्ट के लिए अपना अलग ग्रुप बनाते हैं, बहुत डाइवर्स होता है। बस प्लीज आप ग्रुपिंग ना करें, हम खुद कर लेंगे। बहुत डाइवर्स बनाएंगे। यू नहीं आर सर आप करते हैं। यू आर नहीं सपोज टू सर आप यू आर बना ग्रुप ज्यादा बेहतर है। या सर आप मैंने ये आप डिसीजन ये हो चुका है, बेहतर है। ये डिसीजन हो चुका है, मैं बनाऊंगा, मैं तो उनकी राय ले रहा हूँ। जी हफ्सा। Yes, sir. Sir, My please. request is regarding the deadline. 28th that is Yes, all our sir. presentations and vivas and everything. So 28th के बाद can you like schedule it 29, 30, 31st? Those days are much more convenient for all of us. हम आराम से पे presentation and everything तैयार करके पे present कर सकेंगे. Okay, I That will would I be और will नेक्स्ट ईयर सर इतना जी आगे सर ना हम रखें। अक्सा नेक्स्ट के ईयर साथ हैं। I will try to consider it, लेकिन मेरे कहने का मैं जो कहना चाहता हूँ ना, ये भी एक सब्जेक्ट उन्हीं सब्जेक्ट जैसा है ना, तो इसको यस भी सर। अहमियत सर उतनी दें आप। सर आप यस बेशक सर। नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर लें, बट ग्रुपिंग हमारी मर्जी से होने दें सर प्लीज। नो सर। तो सर आप ग्रुपिंग बनाएं। अच्छा, यस ये सर। ग्रुप अब इसको छोड़ दें, ग्रुपिंग को, वो उस पर डिसीजन हो चुका है। वो सर का अच्छा काम है, हमारा नहीं है। अच्छा सर ज्यादा एक्सटेंड ना कीजिएगा डेट, क्योंकि फिर इसी में सारा कुछ गुजर जाएगा। किस चीज की डेट? सर डेडलाइन अगले साल। सर प्रेजेंटेशन की यानी नहीं, अभी 28 बहुत अगले सारे साल काम करने हैं, अभी तो ये एक सर छोटा सा अगले काम है। साल ले ले सर, अगले ये साल छोटा सा ले काम है, हाँ। अभी तो बहुत सारे काम। अभी आपके क्विज लेने हैं, मिड टर्म लेना है, ठीक है, और कई काम है बीच में। ये तो अभी सर बस आपको मैंने बख्शिना ट्यून अप कर दिया, तो अब आप इंशाल्लाह आगे दौड़ेंगे, ठीक है। ओके सर। ऑलराइट, सर इंशाल्लाह मिड होने हैं। जी, इंशाल्लाह। सर मिड टर्म सर कौन सा मिड होना की है? जगह नहीं होने। सर मिड किसने कहा नहीं टर्म की होने? जगह असेसमेंट्स हो रहे हैं। नहीं, मैं तो लूंगा, मेरी मर्जी है। नो सर सर। ये बहुत सर गलत सर बात है, आप यूनिवर्सिटी की तरफ से इंटीमेशन नहीं मिला कि मिड टर्म नहीं होंगे। मैं नहीं मानता किसी इंटीमेशन को, मेरी मर्जी है, मैं पढ़ा रहा हूँ क्या यूनिवर्सिटी वाले पढ़ा रहे हैं? सर आप आप पढ़ा आपने पहाड़ तोड़ दिया ना एक दफा ही। आपने कहा था पहाड़ तोड़ दूंगा, तोड़ दिया। हाँ बिल्कुल आप तोड़ूंगा पढ़ा पहाड़। रहे हैं सर, आप पढ़ा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ओके, टेक केयर, एंजॉय योर you see coldest Enjoy day of your the winter depression. आज। oh yeah, enjoy the depression, then you will come out of the depression, ठीक है। फिर डिप्रेशन आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि वो कहेगा कि ये तो मुझे एंजॉय करते हैं, तो भागो इसके पास से, ठीक है। तो यूएमटी वालों So ने पागल enjoy कर दिया। your the lovely cold evening, have something बहुत सर्दी है सर। you see, make some soup or coffee or pita and enjoy the lunch, ठीक है। सर फुर्सत See you मिलती है सर टाइम ही नहीं है सबके लिए। हाँ, बस पढ़ाई के लिए टाइम नहीं होता, बाकी सारी चीजों के लिए टाइम होता है। सर इन्हीं पढ़ाई के लिए टाइम है सर सर। पढ़ाई कर। मुझे बताओ, अब नहीं पढ़ना तो कब पढ़ना है? सर मेरी उम्र में आके प्रेजेंटेशन पढ़ोगे? मेरी बात सुने। या यही उम्र आपकी पढ़ने वाली है? साल से पढ़ रही है। बड़े कितने बड़े होने हैं? मोटिवेशन के बाद 3 सर बड़े हम हो लोग बड़े हैं? स्कूल में थे, सारे हमें कहते थे स्कूल पढ़ो, ये कॉलेज जाके थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा, नहीं यूनिवर्सिटी तो मैट्रिक करो। पड़ेगा। मैट्रिक करो, मैट्रिक उसके बाद यूनिवर्सिटी बहुत एफएससी हो आसान है। गए। एफएससी में गए तो उन्होंने बोला कि एफएससी करो, यूनिवर्सिटी चिल है। अब यूनिवर्सिटी आगे कहते हैं चलो 4 साल ये भी पढ़ लो, आगे एमफिल इजी होगा। हाँ, एमफिल के बाद पीएचडी, और पीएचडी के बाद फिर पता चलेगा कि ये तो चिल जिसने कहा था गलत लफ्ज था ये। चिल का मतलब कुछ और है। सर सुकून सिर्फ कब्र में है। चिल चिल का मतलब ठंडे हो जाओगे तुम लोग। नहीं सर, चिल इज जस्ट अनदर पिल। सुकून काम करने में है, मेहनत करने में है, बहुत सुकून है, यकीन कर, ठीक है।
अपनी जो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको ऑनेस्टली डिस्चार्ज करने में जितना सुकून है वो उतना सुकून किसी चीज में नहीं। तो वो प्रोफेशनल में जाके ना, अभी तो पढ़ने में नहीं है ना। आपका वो ये मेकअप है आपका प्रोफेशनल का। यू आर इन दैट प्रोसेस ऑफ मेकिंग। आप मेकिंग के प्रोसेस में है और मेकिंग के प्रोसेस में आपको ये चैलेंजेस मिलने चाहिए। सर आप जब स्टूडेंट होते थे आप भी तो ऐसे ही करते थे ना। नहीं, मैं नहीं ऐसे करता था, मैं कहता मुझे पढ़ाओ जितना भी पढ़ाना है, ठीक है। मैं देखें जो मिस्टेक बच्चे थे। सर हाँ हम बहुत नहीं पढ़ाता था। हम लोग लीव करते मेरी ये ग्लासेस ऐसे तो नहीं ना लगी पढ़ा पढ़ा के लगी। अच्छा ओके, क्या टाइम हो गया? 6:22। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज बच्चों, अल्लाह हाफिज।